मंच एक खुला मंच है, आए जब भी चाहे। किशोर मंच एक खुला मंच है, आए जब भी चाहे। हर किशोर को मिलेगा अवसर, खुलती जाए राहें। आए जब भी चाहे, आए जब भी चाहे, आए जब भी चाहे, आए जब भी चाहे। हो कला सामाजिक ज्ञान, भाषा गणित या हो विज्ञान, कठिन नहीं है विषय कोई भी, करो जरा सा ध्यान। हो कला सामाजिक ज्ञान, भाषा गणित या हो विज्ञान, कठिन नहीं है विषय कोई भी, करो जरा सा ध्यान। ये है किशोर मंच। Dear students, I am Preeti Kiran, PGT Chemistry, Kendriya Vidyalaya, AGCR. Today I am taking up your chemistry lesson. Before 18th century, when very few elements were known, it was very easy to study these elements and their properties. But with the discovery of many more new elements, it became difficult to study the properties of these elements. And it led to the need of the classification of elements and hence the periodic table. Today we will study about that what attempts led to the formation of the periodic table. Earlier attempts were based on the atomic weights. Dobrunner said that the similar elements exist in the group of 3 elements, and he said these groups are as triads. Newland gave the law of octaves. Dmitry Mendeleev, the Russian scientist, his attempt was remarkable. He gave his law that is known as Mendeleev periodic law. The law states that the properties of the elements are the periodic function of their atomic weights. He gave importance to atomic weights. Mendeleev arranged elements horizontally in the order of their increasing atomic weight. He gave preference to the chemical properties and ignored atomic weight if some of the elements did not fit in as per atomic weight. Mendeleev periodic table. It consists of groups. There were 9 vertical columns from 1 to 8. Group 1st to 7 was subdivided into 2 subgroups A and B, and the group 8 divided into 3 sets, each with 3 elements. Group 0, which was consist of inert gases, it was not discovered at the time of Mendeleev. Periods or the series. There were 7 horizontal rows numbered from 1 to 7. They are known as periods. Period first, it has 2 elements. Second period, it has 8 elements. Third period, it has again 8 elements, and second and third periods together known as the short periods. Fourth period has 18 elements. Fifth period has 18 elements. Group 4 and 5, they are known as the long periods. Sixth period consists of 32 elements, the longest period.
Seventh period, it has 32 elements, but still it is incomplete. The uses of the Mendeleev's periodic table. Each group has the elements with the similar properties, and it facilitated the studies of all the elements. Prediction of new elements. At the time of Mendeleev, there were few elements which were undiscovered, but Mendeleev successfully predicted these elements, and he left the vacant spaces in his periodic table. For example, Eka aluminium, which is nowadays gallium, and Eka silicon, which is nowadays germanium. Both the elements were predicted by Mendeleev and very rightly predicted. Doubtful atomic weights were corrected. Defects in the Mendeleev periodic table. Position of hydrogen. Hydrogen resembles in its properties the alkali metals as well as halogens. Its position was disputed and its correct position was not allotted in the Mendeleev periodic table. Anomalous pair of elements. Elements with a higher atomic weight was placed earlier or preceding the element with the lower atomic weight. For example, iodine with atomic number 127 was placed before tellurium with atomic weight 128. This was a defect in the Mendeleev periodic table. Position of isotopes. As we know that the isotopes have different atomic weights, but Mendeleev placed them together. There was no place assigned for the noble gases since they were not discovered at the time of Mendeleev. Henry Moseley, he tried to remove the defects of the Mendeleev's periodic table, and he proposed that atomic number is more important and more fundamental property than atomic weight, and he gave modern periodic table and the modern periodic law. Modern periodic law states that the physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. He arranged elements in the order of increasing atomic numbers. The elements with the similar electronic configuration have similar properties. The modern day periodic table is also known as the long form of periodic table. The periodic repetition of the properties is due to the recurrence of the similar valence shell configuration after regular interval. Periods. The horizontal rows are known as periods. The elements have the same valence shell. In all, there are total 7 periods numbered from 1 to 7. Period 1. The principal valence shell, that is small n is equals to 1, the orbitals being filled up 1s, and we know that in the s orbital 2 electrons can be accommodated, so in total 2 electrons and the 2 elements in the first period. The second period, n is equals to 2, the orbitals being filled up 2s and 2p. The s orbital can accommodate 2 electrons and the p orbital can accommodate 6 electrons. In total 8 electrons and hence 8 elements in second period. Third period, n is equals to 3, 3s and 3p orbitals. Similarly, again 8 electrons to be filled up and 8 elements in the third period. Fourth period, n is equals to 4. The orbitals to be filled up are 4s, 3d and 4p. 2 electrons in the s orbital, 10 electrons in the 3d orbital and 6 electrons in the p orbital. In total, 18 electrons and hence 18 elements in the fourth period. Fifth period, n is equals to 5. Orbitals to be filled up 5s, 4d and 5p. Again 18 electrons to be filled up and hence 18 elements in the fifth period. Sixth period, n is equals to 6. 6s, 4f, 5d and 6p orbital. S orbital can accommodate 2 electrons, f can accommodate 14 electrons.
d orbital has 10 electrons and p 6. In total 32 electrons, hence 32 elements in the 6th period. 7th period, it is still incomplete. Groups. The vertical columns of the periodic table are known as groups. In total, there are 18 groups numbered from 1 to 18. A group has series of elements having similar configuration of the valence shell. Now let me give you one example. Period, this is a second period from lithium to neon. Lithium, the valence shell electronic configuration is 2s1. Beryllium with atomic number 4, the valence shell electronic configuration is 2s2. Boron, atomic number 5, electronic configuration is 2s2 2p1. Carbon has valence shell electronic configuration 2s2 2p2. Nitrogen 2s2 2p3. Oxygen 2s2 2p4. Fluorine 2s2 2p5 and neon 2s2 2p6. Let us take an example of a group. Lithium, sodium, potassium, they are all alkali metals, the first group elements. Lithium, atomic number 3, electronic configuration 1s2 2s1. Sodium, atomic number 11, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s1. Potassium, atomic number 19, electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. From the electronic configuration, we can compare that they all have the similar valence shell electronic configuration and hence the similar properties and are grouped together in the first group. Now let me give you a quick recapitulation of the periodic table. The need for the classification of elements led to the formation of the modern day periodic table. The earlier attempts were based on the atomic weights, Dobronier triads and the Newland, the law of octaves. The remarkable attempt by Mendeleev, he gave Mendeleev periodic law. The properties of the elements are a periodic function of their atomic weight. This is Mendeleev periodic table. The 9 vertical columns called groups numbered from 1 to 8 and 0. Group 1 to 7 further subdivided into 2 subgroups as A and B. Group 8 consists of the 3 elements. Group 0 consists of the inert gases not discovered at the time of Mendeleev. 7 horizontal rows called series or periods from 1 to 7. Periodic table. Mendeleev, he said that the periodic table arranges all the elements in the groups according to their properties. The downward from top to bottom, that is groups. Horizontal rows are known as periods. Elements in the same group have the same number of electrons in the outer shell. This corresponds to their group number. All the group first metals have 1 electron in their outer shell. These elements have 3 electrons in their outer shells. These are the elements having complete outermost shell. As we move down through the group, an extra electron shell is added. Lithium has 3 electrons in the configuration. Sodium, atomic number 11, has 11 electrons and the configuration is 281. One extra shell is added. Potassium has 19 electrons in the configuration 2881. Again, one more shell is added, but all these elements, lithium, sodium and potassium, have 1 electron in their valence shell, so they are all grouped in the same group, that is first group, known as the alkali metals. Modern periodic law by Henry Moseley. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. The long form of periodic table, periods, horizontal rows. A period consists of a series of elements
having same valence shell, total 7 periods numbered from 1 to 7. Groups. A vertical column of the periodic table is called a group. A group has series of elements having similar configuration of the valence shell. This is the modern periodic table. You can very well see the 7 periods and the 18 groups. Dear students, I hope and I am sure you all have understood the modern periodic table and all those historical attempts which led to its formation. Thank you so much. Dear students, the elements after atomic number 92, that is uranium, are known as transuranic elements, and the elements after atomic number 100, that is fermium, they are known as transfermium elements. Element with atomic number 101 is known as mendelevium, with atomic number 102 is known as nobelium, and with atomic number 103 is known as lawrentium. These were named after the famous scientists. But when the elements after element 103, that is lawrentium, was discovered, these elements were simultaneously reported by the scientists of United States and Soviet Union, and they proposed their own names. Now, the different names for the same element, it led to the controversies. To avoid such controversies, then IUPAC decided to give their own name as the rules suggested by IUPAC. IUPAC nomenclature for the elements with atomic number 100 and more than that. Systematic nomenclature directly derived from the atomic number of the element using Latin words for their numbers. IUPAC decided to give the name as per the Latin words. For various digits of the atomic number, the Latin words are written together and "ium" is added at the end. The Latin word roots for the various digits. First of all, for writing the IUPAC name, we have to know the word root for the various digits. For 0, the Latin word is nil, abbreviation is small n. For 1, the Latin word is un, un, abbreviation u. For 2, it is bi, bi, and the abbreviation is b. For 3, it is tri, abbreviation t. 4, the Latin word is quad, abbreviation is q. For the digit 5, the Latin word is pent, the abbreviation is p. 6, the Latin word is hex, abbreviation h. For 7, it is sept, small s is its abbreviation. Digit 8, Latin word oct, abbreviation O. 9, it is N and the abbreviation is E. Now, using the Latin word, we will write the IUPAC name for all those elements with atomic number more than 100. For example, the element with atomic number 101. Its systematic name will be un, nil, unium. For 1, un. For 0, it is nil, that is nil. Again for 1, it is un. And then the name ending is by ium. That is, for the atomic number 101, the systematic name as per this IUPAC is un, nil, unium, and the symbol is UNU.
the first U is capital and the other alphabets are in small. Next example, atomic number 102. Its systematic name is Un-nil-bium. Un, U-N for 1, nil for 0, B-I, by for 2, and the ending of the name by ium, I-U-M, Un-nil-bium. The symbol will be U-N-B. The first alphabet U will be capital and then the next alphabets will be in the small, that is small n and small b. Similarly, element with atomic number 103. Its name will be Un-nil-trium. Its symbol is U-N-T. And so on you can write the symbol. Now I am taking one more example, atomic number 110, that is 110. 1, un, again 1, so again un. For 0, it will be N-I-L and the ending of the name by I-U-M. The complete name will be Un-nilium. Symbol U-U-N. 114, one more example, Un-quadium. The symbol will be U-U-Q. So, this way we can write the IUPAC name of the different elements with atomic number more than 100 and it avoided all the controversies. It was accepted by one and all. Now, let me tell you that the periodic table is subdivided into the 4 blocks, the S, P, D and F block, and that is on the basis of the electronic configuration and the last electron entering the valence subshell. Division of the periodic table into S, P, D and F blocks on the basis of the electronic configuration. But before that, let me tell you that the outermost shell is known as the valence shell. The shell inside the valence shell is known as the penultimate shell, and the shell inner to the penultimate shell is known as the anti-penultimate shell. S block, the elements in which the last electron enters the S subshell of the valence shell. Dear students, as we know that the S orbital can accommodate 2 electrons, so in the S block there are 2 groups and they are known as alkali metals and alkaline earth metals. Their valence shell electronic configuration is NS1 to 2. P block, the elements in which the last electron enters the P subshell of their valence shell, and P orbital can accommodate 6 electrons. So, in total there are 6 groups in the P block, that is from group number 13 to 18. The electronic configuration of the P block elements is NS2 NP1 to 6. The S block and the P block, they are together known as the main block elements or the representative elements. D block, the elements in which the last electron enters the D subshell of their valence shell are called D block elements. The D block elements are placed between S and P block. The D block elements are also known as the transition elements. Now, why these elements are known as transition elements? Dear children, the S block elements are metals and the P block elements, they are mainly non-metals. The shifting from the metallic behavior to the non-metallic behavior is through the D block elements, and that is why they have been given name the transition elements. The transition elements electronic configuration is N-1 D 1 to 10 NS 0 to 2. And since the D subshell can accommodate
10 electrons, so there are 10 groups in the d block. F block elements, the elements in which the last electron enters the F subshell of the valence shell. There are two series in the F block, the lanthanoids and actinoids. Their electronic configuration is N-2 F 1 to 14, N-D 0 to 1, NS2. From the slide you can very well see that the orange colored two groups are the S block, the blue colored the 6 groups are the P block, the 10 groups that is shown in the green color are D block elements, and at the bottom the two series shown in the yellow color are F block elements. So in total, in the periodic table, depending upon the valence shell electronic configuration and in which shell the electron is entering, there are 4 blocks in the periodic table. Most of the elements are metals in the periodic table. The complete S block, the complete D block, they are all metals. The non-metals in the periodic table are lying in the P block. The orange line shows the metalloids. What are metalloids? These are the elements between the metals and the non-metals. They have the properties of both. This line divides metal from the non-metals. These are all metals. You can see very well that S and D block all are metals. And the pink arrow shows that the right hand side of the periodic table has all non-metals. Dear students, I am sure you must have understood the IUPAC nomenclature for all those elements with atomic number more than 100. How IUPAC ended all the controversies and decided to give the names on the basis of the Latin words. And also you must have understood that the periodic table is divided into 4 blocks, that is S, P, D and F, depending upon the last electron entering which subshell. And majority of the elements in the periodic table are metals and they are lying on the left hand side, that is S block and D block. And all the non-metals are lying on the right hand side of the periodic table, that is P block. And there are few metalloids also, which are dividing metals and non-metals. Dear children, in the chapter Classification of Elements and the Periodicity in the Properties, we have studied why do we need to classify the elements, why the periodic table was developed and how it is developed, what is the contribution of Mendeleev and Moseley in the development of the periodic table. We have also studied that the periodic table is divided into 4 blocks, that is S, P, D and F block elements. Today we will study about the physical properties and their trends along the group and the period, and what are the factors which govern all these physical properties. So today's topic is periodic trends in the physical properties. The 4 properties today we will study are ionization enthalpy, atomic and the ionic radii, electron gain enthalpy and electronegativity. The first property which we will study is the atomic radius. But before coming to that, let me give you a quick revision of that what is a group and what is a period and what is the term periodicity means. Group, it is the vertical column. Groups are the vertical columns and the periods are
the horizontal rows. Periodicity. Periodicity is defined as the elements in the same group have similar properties. That is, the properties they reoccur or repeat itself after a regular interval of time. Atomic radius, it is the first physical property. Dear children, we compare the atom with a sphere. Atom is spherical in shape, but to measure its atomic radius is very difficult. It's not that easy to measure just like a ball, because atoms is very small in size, and also there is no definite boundary of an atom. So, the atomic radius which we measure by using X-ray and the spectroscopic methods is just an estimate. It's not at all precise. Atomic radius is defined as half of the internuclear distance between the two bonded atoms. Now, the atoms can be bonded through a covalent bond or through an ionic bond, or it can be a metal. When it is covalently bonded, we say it is a covalent radii, and when it is a metal, we say a metallic radii. From the picture you can see that the two atoms are covalently bonded and the two black dots are the nuclei. The distance between the two nuclei is d, and half of the d is the atomic radius. Covalent radius, we use the term for the non-metallic element. Metallic radius, we use the term for metals. Now, the trend that how atomic radii varies along a period and along a group. Atomic radius along a period decreases from left to right. Now, I am taking the example of the second period, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Just see, the lithium, its atomic number is 3. It has 3 protons and 3 neutrons in the nucleus and 3 electrons which are revolving around the nucleus. Beryllium. Beryllium is the next element of the second period. It has 4 protons in the nucleus because its atomic number is 4, and it has 4 electrons which are revolving around the nucleus. Now, you can see that the 2 electrons are the inner shell and the other 2 electrons are in the second shell. Boron. Now, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p1 because the atomic number of boron is 5. Now, there are 5 protons in the nucleus and the 5 electrons in the boron, out of which the 2 electrons are in the first shell, that is 1s2, then again 2 electrons in the next shell, that is 2s2, and 1 electron is in the p orbital, that is 2p1. Now, you can see the 5 electrons in the boron. The shell remains the same, that is 2. The principal quantum number is same, 2. But electrons are in the same shell, but the atomic number is increasing. The atomic number is increasing, that means the electrons are added in the same shell, and the protons are added in the nucleus. And when the protons are added in the nucleus, the power of the nucleus increases. Its attraction power increases. We say it as effective nuclear charge. The next element after boron is carbon. Its atomic number is 6. That means it has 6 protons and 6 electrons. Again, one more proton is added to the nucleus and the effective nuclear charge is increased. But electron goes to the same 2p shell. So, we are seeing when we are proceeding towards the right hand side of the period, we are seeing that effective nuclear charge is increasing, but the electrons are adding to the same shell. So, you can see that the nitrogen or oxygen or fluorine, what is happening? The shell is same, but the nuclear power is increasing. So, the nucleus attracts the valence shell
with more power, with more attraction, and the electron clouds, it gets decreased in the size. So we can say that when we shift from the left hand side to the right hand side of the period, there is the decrease in the atomic radii. The main two reasons now are: the number of the proton increases. More protons means greater attraction between the nucleus and outer electron. The greater attraction means the outer electrons are brought closer to the nucleus, thus smaller atomic radius results. Now again, with the example of the lithium, beryllium and boron, the elements of the second period, you can very well see that how the electron cloud is shrinking, how the atomic radii is decreasing when the electrons are going into the same shell and the effective nuclear charge is increasing. Lithium, it has 2 electrons in the inner shell but 1 electron in the valence shell. The 3 protons in the nucleus are holding or attracting the valence electron. Beryllium, its atomic number is 4. It has 4 protons in the nucleus, 2 electrons in the inner orbital and 2 more electrons in the outer shell. Again, you can see that the proton is holding the 2 electrons, the valence electrons, more tightly because the shell is same, but the effective nuclear charge is increased. Boron, atomic number 5. There are 5 protons in the nucleus. The 2 electrons you can see in the inner shell, but there are 3 electrons in the valence shell. These 5 protons will hold tightly the 3 valence electrons as compared to lithium and beryllium. From the picture, now it is very much clear that the effective nuclear charge is increasing, but the shell is same, and you can see that there is a clear decrease in the atomic radii from lithium to boron. Lithium is on the left hand side of the period while boron is on the right hand side of the period. Now it is the graphical representation. From the graph also it is very much clear that in a period the atomic radii decreases from left to right. You can see there is a clear decrease in the atomic radii from lithium to beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. Then there is a slight increase in the size of the neon. Neon is a noble gas. Then why there is a decrease in the size of neon? The clear answer is neon is a noble gas. Its octet is complete. It has 8 electrons in the valence shell, and due to the interelectronic repulsions, its size is greater than fluorine. This is an exception. Again, I am showing you the electronic configuration of the second period. From this distribution of electrons also, you can see the increase in the effective nuclear charge and the electrons entering the same shell. From the data, you can see that atomic radii in the picometers, lithium has 152 picometers of atomic radii, beryllium it's 111, boron 88, carbon 77 picometers, nitrogen 74, oxygen 66 picometers and fluorine 64. From the data also you can see that there is a clear decrease in the size of the atomic radii. The atomic radii and its trend along a period is very much clear to you. I have shown you via a graph, via atomic orbital structures and the electronic configuration. Now, the atomic radii trend along a group. Groups are the vertical column, and when we talk about a group, we say that top to bottom. Just like when we studied the period, we said left to right. In a group, when we study, we say top to bottom. Now, the atomic radii from top to bottom in a group increases. Now, why this increase?
This increase is because when we come down in a group, the electrons they enter into the new shell, whereas in the period the electron were entering into the same shell. It is a group, the first group I am taking, lithium, sodium and potassium, just first 3 elements of the first group. Lithium, the atomic number is 3. The electronic distribution will be 2, 1. Sodium, atomic number is 11. The electronic distribution will be 2, 8, 1. That means the introduction of the third shell. Potassium, atomic number 19. The electronic distribution 2, 8, 8, 1. The introduction of the fourth shell. The increase in the number of the shells is responsible for the increase in the atomic radii. The radius increases because the new shells are added. Shielding effect. The shielding effect is also known as the screening effect. Now, what is the screening effect? Actually, what happens? The inner electrons, they act as a wall. They screen the nuclear charge from reaching the valence electrons. These inner electrons, they act as a hurdle, and the effective nuclear charge does not reach the valence electrons. Hence, there is the expansion in the electron cloud, and it is also responsible for the increase in the atomic radii. Decrease in the effective nuclear charge on the valence shell. This is due to the screening effect. So, we have seen that from top to bottom in a group there is an increase in the atomic radii. Now, graphically again you can see that the atomic radii of lithium is smaller than sodium. The size of the sodium atom is smaller than potassium. You can see the data. Lithium, sodium and potassium, there is a clear-cut increase in the atomic radii. Now, the values of the atomic radii in the picometers. Lithium, it is 152 picometers. Atomic radius of sodium is 186 picometers. Potassium, it is 231 picometers. Rubidium, 244 picometers, and cesium, 262 picometers. You can very well see there is an increase in the atomic radii as we are moving down the group. You can also compare the electronic configuration and you can see the new shells responsible for the increase in the atomic radii. Lithium, the electronic configuration is 1s2, 2s1. Sodium, the electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A new shell is added. There is an increase in the principal quantum number. It was 2 in the case of the lithium, whereas it is 3 in the case of the sodium. Potassium, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Clear cut, there is a new shell added. All these factors are responsible for the increase in the atomic radii. Dear children, this increase and decrease in the atomic radii along a period and a group is very much clear to you, and you must understand before understanding all other properties, because all other properties depend upon the atomic radii. Ionic radius. Ionic radius is measured when there is an ion. How ions are formed? We very well know that. Cation is formed when an electron is lost, and an anion is formed when an electron is gained. And cations are always smaller than anion. A cation is smaller than its parent atom due to the presence of the fewer electrons while its nuclear charge remains the same. And also sometimes the shell is removed. For example, sodium ion, its ionic radii is 95 picometers, whereas sodium, the neutral atom, its atomic radii is 186 picometers.
here we can see that sodium ion, a cation, is smaller than the neutral atom. It is because of the two reasons. The number of the proton remains the same. Only the electron is lost in the case of the sodium ion. Also, when the valence electron is removed, the valence shell is also removed, because the electronic configuration of the sodium is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. When the last electron is removed, the third shell, the last shell, is also removed and its electronic configuration remains as 1s2, 2s2, 2p6. Anions are larger than the neutral atom. It is due to the fact that the number of electrons increases, so the increased repulsion among the electrons. Decrease in the effective nuclear charge is the second reason. Fluoride ion, its ionic radius is 136 picometers, whereas fluorine atomic radii is 64 picometers. Just now we have studied about atomic radii and ionic radii. All those measurements which we have are through X-ray or spectroscopic methods. These are just estimates and not precise atomic or ionic radii. We have studied that atomic radii, it decreases along a period and increases down the group. It is only depends upon the distribution of electrons around the nucleus, the number of the shells and the effective nuclear charge. We also studied that a cation is always smaller than a parent atom and anion is always larger than the parent atom. It is because the cation is formed by the loss of electron and anion is formed by the gain of electron. I hope atomic radii and its strength along a period and along a group is clear to you. Hello students, I am Subramaniam. Today we will be discussing mathematical induction. It is one of the most powerful tool in proving mathematical results involving n. It mainly consists of two steps. Firstly, we verify the result for n equal to 1 and then we assume the result for some value of n, say k, and then on the basis of this assumption we try to prove it for n is equal to k plus 1. For instance, if our question is to prove 1 plus 3 plus 5 and so on up to n terms equal to n square, that is sum of the first n odd numbers is n square. This we have to prove. Our first step is to verify the result for n equal to 1. So, we have P 1 is equal to 1 equal to 1 square. It is obviously true. Thus, P 1 is true. Then we assume this for k, that is we assume that P k be true. This means 1 plus 3 plus 5 and so on up to 2k minus 1 is equal to k square. Our next task is to verify it for k plus 1, and for this we add one more term both the sides.
which gives us 1, 3, 5 and so on up to 2k plus 1, and here we have k square plus 2k plus 1, which equals k plus 1 square. Now, this shows that pk plus 1 is true. This is second step, and thus the result is proved for all values of n. Sometimes we cannot start the first step from n equal to 1. For instance, the problem to prove factorial n greater than 2 raised to power n. Here we observe that when n equal to 1, we have factorial 1 more than 2, which is not correct. Similarly, when you take n is equal to 2, we have factorial 2 more than 4, again not correct. N equal to 3, factorial 3 more than 8, again is not correct. However, from n 4 onwards, it is correct. So, we first find P 4, that equals factorial 4 more than 2 raised to power 4. Of course, factorial 4 is 24 and 2 power 4 is 16. So, the result is correct. So, P 4 is verified. Thereafter, we go for P k. So, let P k be true. This means factorial k is more than 2 raised to power k. Now, from this step, we have to prove that p k plus 1 is also true, and for that we have 1 factorial k times k plus 1 is more than 2 raised to power k times k plus 1. This side becomes factorial k plus 1. Here we can write this as 2 raised to power k times 2, because k plus 1 is more than 2. Thus, we have factorial k plus 1 is more than 2 raised to power k plus 1, which means p k plus 1 is true. Now, a question may arise: how will we decide where to start? The answer is simple. The question itself will guide where to start. In this question, factorial n more than 2 raised to power n was valid only when n was more than or equal to 4. We take the number which is the minimum, which is correct for the required condition or the equation. Let us take one more problem. Suppose we have to show 1 cube plus 2 cube and so on up to n cube is equal to n times n plus 1 upon 2 whole square. When nothing is mentioned, it means we start from P 1 only. So, we take P 1, that is 1 cube equal to 1 times 1 plus 1 times this upon 2 whole square. Left side is 1, right side is again 1. So, it is satisfied. So, P 1 is true, the first step. Now, let P k be true. This means 1 cube plus 2 cube and so on up to k cube is equal to k times k plus 1 by 2 whole square. As before, we add next term both sides, which makes 1 cube, 2 cube and so on up to k cube plus k plus 1 cube. This equals k times k plus 1 by 2
whole square plus k plus 1 cube. Right side equals k plus 1 by 2 whole square times k square plus 4 times k plus 1. This equals k plus 1 by 2 whole square times k plus 2 whole square, which means it is k plus 1 times k plus 1 plus 1 upon 2 whole square. This means p k plus 1 is also true. Now, this completes second step, and hence p n is true for all n belonging to natural numbers. We can have one more example, say 1 square plus 2 square up to n square, to prove it is to be n plus 1 2n plus 1 over 6. Again, we first verify p 1, that is equal to 1 square equal to 1 times 2 times 3 upon 6, which is true. Thus, p 1 is true. Now, let p k be true. This means 1 square plus 2 square and so on up to k square is equal to k times k plus 1 times k plus 2k plus 1 over 6. Again, to go for pk plus 1, we add one more term. So, we get 1 square, 2 square and so on up to k square plus k plus 1 square. This makes k plus 1 times 2k plus 1 over 6 plus k plus 1 square. Now, right side equals again k plus 1 by 6 times k times 2k plus 1 plus 6k plus 1. This makes k plus 1 by 6 times 2k square plus 7k plus 6, which equals k plus 1 upon 6 over 2k plus 3 times k plus 2, which can be arranged as k plus 1, k plus 1 plus 1, 2k plus 1 plus 1. Thus, p k plus 1 is true. This completes the second step, and hence we can say 1 square plus 2 square and so on up to n square is equal to n times n plus 1 times 2n plus 1 by 6 for all n belonging to n. Often it happens that students have a doubt, why should we take p 1 at all? Because they feel that p 1 is playing no role in the whole proof. The fact is different. Let us see how it is happened. Suppose you have to prove 1 plus 2 plus 3 and so on
up to n equal to n times n plus 1 by 2 plus 3. You assume it for k. So, let p k be true. This means 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to k is equal to k times k plus 1 by 2 plus 3. Now, to come for p k plus 1, we add one more term. So, we get 1 plus 2 plus 3 and so on up to k and k plus 1. This side we get k times k plus 1 by 2 plus 3 plus k plus 1. This implies 1 plus 2 plus 3 and so on up to k plus 1 equals k plus 1 by 2 times k plus 2 plus 3, which equals to k plus 1 times k plus 1 plus 1 by 2 plus 3. This implies p k plus 1 is also true. Now, can we at this stage claim that p n is true for all n belonging to n? No, we cannot, because if you check the result for any value of k, say n is equal to 3, what do we have? 1 plus 2 plus 3 equal to 6 in the left hand side, and in right hand side you have 3 times 4 upon 2 plus 3 equal to 9, while 6 is not equal to 9. So, we are arriving at a wrong result. Why it happened? What has gone wrong? If you care for p 1, this becomes 1 equal to 1 times 2 upon 2 plus 3, which is not correct, because 1 cannot be equal to 4. So, this example clearly indicates that both these steps are essential in proving via mathematical induction. Today, we have discussed mathematical induction. We have worked out 3 problems. Besides that, we also saw an example which clearly indicates why the 2 steps are essential. In our next episode, we will be taking some more problems of different type, including the one in geometry. Thank you very much. Hello students. In our previous episode, we discussed mathematical induction and also worked out 3-4 problems. Now, you must have noticed that all those problems were from algebra. So, do not think that it is only for algebra. Today, we take an example of geometry as well. You all know that in any polygon, sum of all the interior angles is n minus 2 times 180 degree. Now, this we can prove by mathematical induction. As you know, for any polygon, the number of sides n is at least 3, which makes it a triangle. And we know in a triangle, sum of the 3 angles is exactly 180 degree. Thus, p 1 is true. Now,
Next, we have to assume the result for k and then prove for k plus 1. For this, first we assume that result is true for k, which means that any polygon having k sides will have the angle sum k minus 2 times 180 degree. And from this assumption, we have to prove for k plus 1 sides. For this, we draw a polygon A1, A2, A3 and so on up to AK, then AK plus 1. So, before us we have a polygon having k plus 1 sides, namely A1, A2, A2, A3 and so on up to A3 up to AK, then AK plus 1 and AK plus 1 A1. Here the dotted lines indicate the missing sides, which cannot be shown in a diagram. In fact, this dotted line indicates the sides A3, A4, A4, A3 and so on up to AK minus 1 AK. Now, if we join AK with A1, we have two polygons, one with k sides, other with k plus 1 sides, namely A1, A2, A2, A3 and so on up to AK A1. This has k sides, and secondly A1, A2, A2, A3 and so on up to AK A plus 1 and then AK plus 1 A1. Now, as seen in the diagram, clearly angle sum of the polygon A1, A2 and so on up to AK plus 1 equals angle sum for A1, A2 and so on up to AK plus angle sum for the triangle A1, AK, AK plus 1, which equals k minus 2 times 180 degree plus 180 degree, which equals k minus 1 180 degree, which further equals k plus 1 minus 2 180 degree. This implies Pk plus 1 is true. Thus, both the steps of induction are complete. So, we can claim that Pn is true for all n belonging to n, which means for any quadrilateral we can establish a well defined formula for the angle sum. Now, so far whatever problem we considered in which either equality was involved or inequality was involved, but in mathematics there are other problems in which there is no equality or inequality, but some other relation is mentioned, that x to n minus y to n is divisible by x plus y. First we check for P1. We have P1 equals x square minus y square divisible by x plus y.
which is true because x square minus y square is always x plus y times x minus y, and clearly x plus y is a factor of x square minus y square. Our next step is to assume it for k and then try to prove for k plus 1. So, let us assume that p k be true. This means x 2 k minus y 2 k is divisible by x plus y. For p k plus 1, consider x 2 k plus 1 minus y 2 k plus 1. This equals x 2 k plus 2 minus y 2 k plus 2. Now, we can arrange this as 2 k plus 2 minus y 2 k plus 2, which can be arranged as x 2 k plus 2 minus x square y 2 k plus x square y 2 k minus y 2 k plus 2. Now, here in the first two terms x square is common, which gives x 2 k minus y 2 k. In the next two terms, we have y 2 k common, which gives x square minus y square. Now, clearly the first term is divisible by x plus y as per our induction assumption hypothesis, while the second term x square minus y square is obviously divisible by x plus y. In this manner, the entire right hand side is divisible by x plus y, and hence left hand side should be divisible by x plus y. That means x power 2 k plus 2 minus y power 2 k plus 2 is also divisible by x plus y, and thus we have proved p k plus 1 is also true. Thus, both the two steps are cleared. So, we can claim that p n is true for all n belonging to n. It means the given result is true for all natural numbers. We can take one more such example in which we have to discuss about the divisibility. Suppose we have to prove that 41 raised to power n minus 14 raised to power n is divisible by 27. As before, first we check the result for n equal to 1. So, P 1 stands for 41 minus 14 is divisible by 27, which is true obviously, because the number itself is 27. So, P 1 is clearly true. We have done the first step. Now, for the second step, we have to slightly play some trick. First, we assume that f k is 41 power k minus 14 power k. This implies f k plus 1 is equal to 41 raised to power k plus 1 minus 14 raised to power
k plus 1. Now, from these two results, we eliminate 41 raised to power k term. So, we can multiply the first equation by 41 and subtract from the second. So, we get f k plus 1 minus 41 f k equal to minus 14 power k plus 1 plus 41 times 14 raised to power k, which equals 14 raised to power k times 41 minus 14, which equals 27 times 14 raised to power k. This means f k plus 1 equals 41 times f k plus 27 times 14 raised to power k. In right hand side, the first term is divisible by 27 by our induction hypothesis, while second term clearly has a factor of 27. So, it is divisible by 27. As a result, the entire right hand side is divisible by 27, which implies left hand side divisible by 27. That means f k plus 1 is divisible by 27. This means p k plus 1 is true. Hence, we can claim that by mathematical induction, p n is true for all n belonging to n. So, we have given two examples on divisibility using mathematical induction. Having done this, we would like to emphasize one point: why this kind of approach gives a guarantee that the result is true for all values of n. Actually, the name mathematical induction is misleading. It is not inductive process, it is actually a deductive process. In fact, when we first verify for 1, that is p 1 we verify, then we assume p k, and on the basis of that we prove p k plus 1. Now, how these two steps guarantees for all natural numbers, that is interesting to see. In fact, when we say p k implies p k plus 1, this k was not fixed, this k was arbitrary. Also, we have already shown p 1 is true. Now, the first step and second step are apparently infinite steps. How? When we apply 1 to second, we get p 1 implies p 2. This gives third. When we apply third to second again, we get p 2 implies p 3. We get fourth. When we apply fourth to again second, we get p 3 implies p 4. And this way we have no limit, we can keep on apply it. So, that whole application is summarized in step 2, and hence it is true for all values of n. This is the logic behind induction. Well, so in this episode we have completed the idea of mathematical induction, taking almost all variety of problems
to prove using mathematical induction, because we have covered almost all types of problems in our episode. Thank you very much. Dear students, in the previous episodes, we have studied about the deductive approach, inductive approach, mathematical statements and principle of mathematical induction. We also solved some problems based on some of the series. Today, we will be learning how to solve problems based on divisibility and inequality using principle of mathematical induction. Using mathematical induction, prove that 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 plus 5 is divisible by 9 for all n belonging to n. For the solution, let P n be the given statement. P n is 10 to the power n plus 3 into 4 to the power n plus 2 plus 5 is divisible by 9 for every n belonging to n. In the first step, P of 1 is 10 to the power 1 plus 3 into 4 to the power 1 plus 2 plus 5. This can be simplified as 10 plus 3 into 64 plus 5. This gives 15 plus 192 obviously is 207, which is divisible by 9. That shows that P 1 is true. Now, in the step 2, let P m be true, that is 10 power m plus 3 into 4 power m plus 2 plus 5 is divisible by 9. This implies 10 to the power m plus 3 into 4 power m plus 2 plus 5 can be written as 9 lambda for some integer lambda. Again, this could be written as 10 to the power m is equal to 9 lambda minus 3 into 4 power m plus 2 minus 5. This equation can be taken as first equation. P m plus 1, we will write 10 to the power m plus 1 plus 3 into 4 power m plus 3 plus 5. This could be split as 10 into 10 to the power m plus 3 into 4 raised to m plus 2 plus 5. Here, taking 10 as common, 10 into 9 lambda minus 3 into 4 power m plus 2 minus 5 plus 12 into 4 raised to m plus 2 plus 5. This we have taken the help of the first equation, and after opening the brackets we get 90 lambda minus 30 into 4 power m plus 2 minus 50 plus 12 into 4 power m plus 2 plus 5. Here on simplification we get 90 lambda minus 18 into 4 power m plus 2 minus 45. Taking 9 common, we could again express this as 9 into 10 lambda minus 2 into 4 raised to m plus 2 minus 5, which is divisible by 9. That implies P of m plus 1 is true. Hence, by principle of mathematical induction, P of n is true for all n belonging to n. Now, let us solve one more question based on divisibility similar to the previous one. By using principle of mathematical induction, prove that 41 raised to n minus 14 raised to n is divisible by 27 for all n belonging to n. Now, let P n be the statement 41 raised to n minus 14 raised to n is divisible by 27. P of 1 means 41 raised to 1 minus 14 raised to 1 is divisible by 27. That is
27 is divisible by 27, which is quite obvious. Therefore, P of 1 is true. Now, let P m be true, that is 41 raised to m minus 14 raised to m is divisible by 27. That implies 41 raised to m minus 14 raised to m is equal to 27 lambda for some integer lambda. This implies 41 raised to m is equal to 27 lambda plus 14 raised to m. Take this equation as the first equation. For P of m plus 1 to be true, we have to prove 41 power m plus 1 minus 14 power m plus 1 is divisible by 27. This could be simplified as 41 into 41 raised to m minus 14 into 14 raised to m. Taking 41 common, I can get 41 into 27 lambda plus 14 m minus 14 into 14 raised to m. This we have got using the first equation. Now, after opening the brackets, this can be easily simplified as 41 into 27 lambda plus 41 into 14 raised to m minus 14 into 14 raised to m. That can be written as 41 into 27 lambda plus 41 minus 14 into 14 raised to m. That gives 41 into 27 lambda plus 27 into 14 raised to m. On simplification, we get 27 common, 41 lambda plus 14 raised to m, which is divisible by 27. This implies P of m plus 1 is true. Hence, by the principle of mathematical induction, P of n is true for all n belonging to n. I hope you must have understood the two previous questions based on divisibility using principle of mathematical induction. Now, we will take up some examples from inequations. Prove by mathematical induction that n is less than 2 power n for all n belonging to n. For the solution, let P n be the statement given by P of n is such that n is less than 2 raised to n. In first step, we will write P of 1 as 1 is less than 2. Therefore, P of 1 is true. In step 2, let P of m be true. Then m is less than 2 raised to m. To show that P of m plus 1 is true, we will have to prove that m plus 1 is less than 2 raised to m plus 1. Now, as P of m is true, that implies m is less than 2 raised to m. That implies 2 into n is less than 2 into 2 raised to m. Multiplying by 2 on both the sides, we have 2m less than 2 raised to m plus 1. 2m can be written as m plus m less than 2 raised to m plus 1. Obviously, this implies m plus 1 is less than or equal to m plus m less than 2 raised to m plus 1. Since 1 is less than or equal to m, m plus 1 is less than or equal to m plus m. This implies m plus 1 is less than 2 raised to m plus 1. Hence, by the principle of mathematical induction, P of n is true for all n belonging to n. Now, students, we have one more example here. Prove by mathematical induction the inequality 1 plus x raised to n is greater than or equal to 1 plus n x whenever x is positive and n is a positive integer. Solution: let P n be the statement given by P of n 1 plus x raised to n is greater than or equal to 1 plus n x. In first step, P of 1 is 1 plus x raised to 1 is greater than or equal to 1 plus 1 into x. Therefore, P of 1 is true. In step 2, let P m be true. Then 1 plus x raised to m is greater than or equal to 1 plus m x. Take this equation as 1. We shall now prove that P of m plus 1 is true. Whenever P of m is true, 1 plus x raised to m plus 1
is greater than or equal to 1 plus m plus 1 into x. Now, as p of m is true, we have 1 plus x raised to m is greater than or equal to 1 plus m x. This implies 1 plus x into 1 plus x raised to m is greater than or equal to 1 plus x into 1 plus m x. Could you guess how we have written this? We have multiplied both the sides by 1 plus x. This can be written as 1 plus x raised to m plus 1 is greater than or equal to 1 plus m plus 1 into x plus m x square. This further can be written as 1 plus x raised to m plus 1 greater than or equal to 1 plus m plus 1 into x plus m x square, which is again greater than or equal to 1 plus m plus 1 into x. As m belongs to n, x square is greater or equal to 0 for every x belonging to R. Therefore, m x square is greater than 0. This implies 1 plus x raised to m plus 1 is greater than or equal to 1 plus m plus 1 into x. Thus, p of m plus 1 is true. Hence, by the principle of mathematical induction, p n is true for all n belonging to n. That is, 1 plus x raised to n is greater than or equal to 1 plus n x for all n belonging to n. Now, students, as you have learnt how to use principle of mathematical induction to solve problems on sum of the series and divisibility, I have a small assignment for you. Take down the questions. Question number 1, prove by mathematical induction that 1 plus 2 plus 3 plus n is equal to n into n plus 1 by 2 for every n belonging to n. Question number 2, prove that 3 raised to 2n plus 2 minus 8n minus 9 is divisible by 8 for all n belonging to n by principle of mathematical induction. Question number 3, prove that x power 2n minus y power 2n is divisible by x plus y for every n belonging to n using mathematical induction. So, students, we have learnt how to use principle of mathematical induction to solve problems on divisibility and inequality. In the next session, we shall take up some more interesting examples. See you in the next session. Goodbye. हमारी धरती, यहाँ के पेड़ पौधे, जीव जंतु, हम सब के लिए सूर्य से ही सारी ऊर्जा आती है। इसी ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 25% भाग बादलों और धूल कणों द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है और लगभग 15% वायुमंडल द्वारा शोषित हो जाता है और शेष का काफी हिस्सा जल चक्र को शक्ति प्रदान करता है। केवल 1% से भी कम पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा धरती की सतह को गर्मी देती है। इसी ऊर्जा से होती है गति पवन में, शक्ति समुद्र की लहरों में। पर सौर ऊर्जा हम तक पहुंचती है तो आखिर किस रूप में? ये हम तक पहुंचती है प्रकाश के रूप में और ऊष्मा के रूप में। एक सीडी लेकर देखते हैं। इस पर प्रकाश की किरणें सीधी पड़ रही हैं और अब नहीं। अंतर पता चला? यदि सौर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करें तो सूर्य के प्रकाश से ही पेड़ पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं। पेड़ पौधे, खासकर पत्ते,
सौर ऊर्जा को संचय करने का काम लाखों वर्षों से कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा। भोजन वास्तव में संचित सौर ऊर्जा ही तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल, डीजल, ये सभी ईंधन पेड़-पौधे और जीव-जंतुओं के ही जमीन में दब जाने से बने हैं। लेकिन जिस रफ्तार से हम इन्हें खर्च कर रहे हैं, ये सब तो खत्म हो जाएंगे एक दिन। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिक प्रयत्नशील हैं ऊर्जा के विकल्प स्रोतों को ढूंढने में। आइए, आज हम चलते हैं एक ऐसे ऊर्जा ग्राम में जहां सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से ही सब काम किए जाते हैं। इन खिड़कियों को जरा गौर से देखिए तो ये शीशे की हैं, तिरछी झुकी हुई, खड़ी होने की बजाय। तिरछी झुकी शीशे की सतह सीधे खड़े शीशे की सतह से ज्यादा ऊष्मा संचय कर सकती है। आपने कई घरों, अस्पतालों, होटलों में इस तरह के सोलर पैनल यानी सौर पट देखे होंगे। खुली जगह में जहां काफी धूप आती है, ऐसे सौर पट आसानी से रखे जा सकते हैं। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करके हम इस लालटेन को दिन में चार्ज करके रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सौर सेल कई आकार और साइजों में मिलते हैं। इसमें 18 सौर सेल सीरीज में जोड़े गए हैं। इससे लगभग 9 वॉट की ऊर्जा पावर यानी शक्ति मिल सकती है। ये है सौर गीजर। क्या सिर्फ सौर ऊर्जा से पानी भी गर्म किया जा सकता है? शीशे के पट के नीचे तांबे की नलियां होती हैं। ठंडे पानी को इन नलियों से गुजारा जाता है और संचित सौर ऊर्जा से पानी गर्म हो जाता है। ये है जल चक्र का लघु रूप। पानी चाहे अशुद्ध हो या खारा, इसके द्वारा पानी एकदम शुद्ध और कीटाणु रहित हो जाता है, यानी एकदम डिस्टिल्ड वाटर। सौर ऊर्जा भोजन भी पका देती है। इसे उस जगह और दिशा में रखें जहां सौर किरणें ज्यादा से ज्यादा मिल सकें। इसमें लगे दर्पण के जरिए सौर किरणों को डिब्बे में रखे खाना पकाने वाले बर्तनों पर डाला जाता है। ये डिब्बा और इसमें रखे बर्तन एल्यूमीनियम के बने होते हैं। डिब्बे के अंदर और बर्तनों की बाहरी सतह पर काले रंग की परत होती है, और ये इसलिए क्योंकि काले रंग की सतह दूसरे रंग की सतहों से ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा को शोषित कर सकती है। साधारणतया खाना पकाने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान की जरूरत पड़ती है, जो इसमें अनुकूल परिस्थितियों में 2 या 3 घंटे में हो जाता है। लीजिए, तैयार है गर्मा गर्म खीर।
सोलर कुकर का एक बड़ा आकार और रूप सोलर मील मेकर। इसमें 30 से 40 लोगों तक के लिए बन सकता है खाना एक समय में। क्या कमाल की चीज है ये भी, ना तो खर्च ईंधन का और ना ही डर धुएं का। खाने की चीजें सुखाने के लिए सौर ड्रायर। ये है सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप। सौर ऊर्जा से बनी बिजली से चलती है मोटर, जिससे पानी को निचले तल से एक जगह से दूसरी जगह ऊंचे तल तक पहुंचाया जाता है। हैरान ना हो, ये रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है सौर ऊर्जा से। ये है सौर छिड़काव यंत्र, खेतों में कीटनाशक दवाओं के छिड़कने के लिए। और ये हैं सौर ऊर्जा की बैटरियां। इन बैटरियों में सौर ऊर्जा से बनी बिजली को संचित किया गया है और उनसे चलते हैं कई उपकरण। वैज्ञानिक सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे उपकरण बना रहे हैं जिनसे कारें, स्कूटर, यहां तक कि हवाई जहाज भी इस ऊर्जा से चल सकेंगे निकट भविष्य में। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट यानी कृत्रिम उपग्रह अभी तक भेजे गए हैं, वो सब सोलर पैनल से ही काम करते हैं।
लेकिन ये सोलर पैनल कुछ अलग किस्म के होते हैं, जिन्हें बचाना पड़ता है तेज विकिरणों से, जबकि धरती के सौर पैनलों को बचाना पड़ता है धूल से, बारिश से। सूरज तो निकलता है सिर्फ दिन में, मगर रात को क्या करें? तब तो सौर ऊर्जा मिल नहीं सकती। लेकिन कुदरत में इसका भी हल है। पवन तो चलती है दिन में भी और रात में भी। ये है एक पवन चक्की, जो पवन की गति से चलती है और जो बच्चों के खेलने वाली फिरकी का ही एक बड़ा रूप है। पवन चक्की में पंखे होते हैं, 2 या 3 या 4 या 4 से भी ज्यादा। पवन चक्की से चलाया जा सकता है पानी का पंप। और कई पवन चक्कियों के समूह से बनाई जा सकती है बिजली। आपने गौर किया, ऊर्जाग्राम का वातावरण कितना साफ है? कहीं धुआं नहीं, कहीं गंदगी नहीं। लागत सिर्फ एक बार, फिर मिलती रहती है लगातार ऊर्जा। एक और दिलचस्प बात, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा इतनी है प्रकृति में कि ये हमारे लिए खत्म नहीं होने वाली है और इसका इस्तेमाल बार-बार किया जा सकता है। लेकिन एक समस्या है। सौर ऊर्जा धरती पर हर जगह, हर मौसम में एक बराबर नहीं आती। आती है तो सिर्फ दिन में, रात में नहीं। पवन भी हर जगह, हर समय तेज गति से नहीं चलती। ये कुछ सीमाएं हैं इस ऊर्जा की, पर इन्हें संचित कर रखने के प्रयास जारी हैं। समता, समाजवाद और लोकतंत्र का आपसी रिश्ता बहुत करीब का है। समता का अर्थ है समाज में फैली हर तरह की गैर बराबरी को खत्म करना, ताकि असंतोष और आक्रोश घट सकें। और समाजवाद की मंजिल है कि किसी भी समाज में व्याप्त गैर बराबरी को कम करना और आर्थिक जीवन में किसी एक खास तबके की जकड़न को घटाना। यही मकसद है लोकतंत्र का राजनीतिक जीवन में। आम आदमी की हिस्सेदारी बढ़ाना और मुट्ठी भर लोगों की ताकत को कम करना। इस तरह अगर देखें तो समता, समाजवाद और लोकतंत्र ऐसे विषय हैं कि किसी एक के बारे में अपनी सोच और समझ ठीक करनी हो तो हमको एक साथ इन तीनों पर विचार करना होगा।
का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। बापू इस बात पर जोर देते रहे कि गोरे अपने को हिंदुस्तानियों से बेहतर नहीं समझ सकते। इसी तरह उनका यह भी मानना था कि खुद हिंदुस्तानी अपने आप को जाति के आधार पर या सिर्फ अमीर होने की वजह से खुद को दूसरे हिंदुस्तानियों से बड़ा या अच्छा नहीं समझ सकते। बापू का मानना था कि आज़ाद हिंदुस्तान में समाज के अलग अलग तबकों के बीच गैर बराबरी की खाई बची नहीं रह सकती। गांधी जी के सबसे प्यारे शिष्य थे जवाहरलाल नेहरू। वह सोवियत क्रांति और समाजवादी विचारकों के असर में थे। वह भी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि समता के बिना लोकतंत्र के कोई मायने नहीं। उनका यह भी मानना था कि समाजवाद का असली मतलब गैर बराबरी दूर करना और समता की ओर बढ़ना है। सब में बड़ा पेशा और सब में बड़ा धर्म और सब में बड़ा फर्ज हर एक का है। हिंदुस्तान इस बड़े खानदान को 36 करोड़ के उसकी खिदमत करना, उसको बढ़ाना और हमेशा इस तरह से देखना उसको कि हमें उसमें जो मुसीबत ज़दा हैं, जो गिरे हुए हैं, दबे हैं, उनको उठाना। हमेशा ये सोचना कि हमारा फर्ज है कि हर एक शख्स की आंख से आंसू, उस आंसू को पोंछना। समाजवाद जिस समता को तलाशता है और समाजवादी जिसके लिए संघर्ष करते हैं, वह समता खास तौर से आर्थिक जीवन से जुड़ी है। पर समाज में फैली गैर बराबरी सिर्फ आर्थिक कारणों से ही नहीं होती है। कई बार नस्लवादी सोच और लिंग भेद की गैर बराबरी सामाजिक सुख शांति को जोखिम में डालती है। नस्लवादी सोच सिर्फ उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के दौर में ही नहीं मिलता। विकसित खुशहाल देश भी इसके शिकार हो सकते हैं। अमेरिका में गोरे और अफ्रीकी मूल के नागरिकों के बीच काफी अरसे से कड़वाहट और तनाव भरे रिश्ते हैं। अफ्रीकनों के वंशज गुलामों को आज़ादी दिलाने के लिए डटकर लड़ने वाले अब्राहम लिंकन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी। 20वीं शताब्दी में भी यह लड़ाई जारी रही। मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में नस्लवादी भेदभाव को खत्म करने के लिए गांधी जी का बतलाया शांतिपूर्ण सिविल नाफरमानी वाला तरीका अपनाया और बड़ी हद तक वह इस काम में कामयाब भी रहे। रंगभेद और नस्लवाद के खिलाफ अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने जोरदार संघर्ष किया और लगभग सरकारी नौकरियों में दलितों और पिछड़े तबकों के लिए आरक्षण के सवाल पर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला सरकार ने किया तो इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन छिड़ गया था। तब यही बात पता चली थी कि आज भी इस विषय में बहुत सारे लोगों के मन में तरह तरह की गलतफहमियां बची हुई हैं। सच तो यह है कि आरक्षण की नीति समता के सिद्धांत और आदर्श के विपरीत नहीं। जब तक समाज में गैर बराबरी
या गैर बराबरी का एहसास बचा रहता है, तब तक असंतोष और गुस्सा विस्फोटक बना रहेगा। ऐसी हालत में अमन चैन ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। मंडल आयोग का गठन समाज की गैर बराबरी को मिटाने के लिए ही किया गया था और इसे नकारा नहीं जा सकता कि इसकी सिफारिशों ने पिछड़े तबके के लिए कोई जरूरत नहीं। मार्क्सवादी या जो समाजवादी विचारधाराएं हैं, उनका आधार ये रहा है कि समानता के सिद्धांत को समाज में लागू करने के लिए आवश्यक ये है कि समाज को नए ढांचे में ढाला जाए। समाजवाद उस कोशिश की तरफ अग्रसर करने वाली एक विचारधारा है जो समाज के ढांचे को बदल करके समानता को लागू करने की कोशिश कही जा सकती है। दूसरे दृष्टिकोण, खासतौर से लिबरल थियरी जिसको हम कहते हैं, उसमें ये आवश्यक मान्यता नहीं है कि बगैर समाज के ढांचे को बदले हुए समता नहीं लाई जा सकती। इसलिए ऐसी विचारधाराएं हैं जो बाजारू ताकतों के माध्यम से, खासतौर से जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहते हैं या इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करते हैं, लोकतंत्र तो इस सिद्धांत पे आधारित है कि समता के बगैर लोकतांत्रिक पद्धति चल ही नहीं सकती। लेकिन इसमें संघर्ष सामाजिक वास्तविकताओं और सिद्धांतों और आदर्श का है। सारे लोकतांत्रिक समाज जो कॉन्स्टिट्यूशंस या संविधान पे आधारित हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस में ये बात साफ कही गई है कि समानता का सिद्धांत अपनाया जाए। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देशों में भी कल्याणकारी राज यानी वेलफेयर स्टेट की मान्यता जड़ पकड़ चुकी है। पूंजीवादी अमेरिका में तक खुले बाजार के तर्क को नकार दिया गया है। इजारेदार व्यापारियों और मुनाफाखोर उद्यमियों के ऊपर सरकार का नियंत्रण और निगरानी जरूरी समझे जाते हैं। आज भी समाजवाद की अहमियत बनी हुई है।
एक ऐसी विचारधारा के रूप में जो समाज में गैर बराबरी को दूर करने के लिए प्रेरणा देती है और राजनीति को आम आदमी की बेहतरी के लिए दिशा दिखाती है। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान हमेशा इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के साथ साथ समाज में फैली गैर बराबरी को दूर करना भी हमारे संघर्ष का अभिन्न हिस्सा है। बापू ने यह बात बेहिचक कही थी कि छुआछूत मानव जाति और ईश्वर के विरुद्ध अपराध है। इसीलिए उन्होंने मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर जोरदार आंदोलन छेड़ा था। भारत के आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने जिन पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया, उनका लक्ष्य आर्थिक जीवन में फैली दर्दनाक गैर बराबरी को जड़ से खत्म करना था। भूमि सुधार, जमींदारी का उन्मूलन और बड़े बड़े बांधों का निर्माण, ताकि बाढ़ से होने वाली तबाही को रोका जा सके, बंजर इलाके को उपजाऊ बनाया जा सके। यह सब पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए कामों में ही शामिल हैं। इन योजनाओं का एक और मकसद यह भी था कि हिंदुस्तान के आम नागरिक को पढ़ा लिखा बनाया जा सके और बीमारी की हालत में राहत पहुंचाने के लिए अस्पताल, दवाइयां आदि का इंतजाम किया जा सके। आजादी के बाद हिंदुस्तान ने जो अर्थव्यवस्था अपनाई, उसका मकसद भी यही था। खुशहाल संपन्न तबका अपना अकेला कब्जा न बनाए रख सके। सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योगों की बात इसीलिए सोची गई थी कि सरकार के नियंत्रण में विकास की दिशा और इसकी दर रहे। पिछले 25 वर्षों में ग्रामीण विकास की और सामुदायिक विकास की जितनी योजनाएं बनाई गईं, उन सब का उद्देश्य भी समाज में फैली गैर बराबरी को खत्म करना है। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते वक्त यह घोषणा की कि इस धनराशि का लाभ समाज के गरीब और साधनहीन तबके के लिए किया जाना चाहिए। उन्हें आसान दर पर उधार दिया जाना चाहिए। श्रीमती गांधी ने ही रियासतों और रजवाड़ों का और राज परिवारों को मिलने वाले विशेष अधिकारों का उन्मूलन किया। उन्होंने न सिर्फ गरीबी हटाने का नारा दिया, बल्कि यह कोशिश भी की कि समाज में फैले भेदभाव के प्रतीकों को भी मिटाया जा सके। बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए कानून बनाए गए। 1976 में सामाजिक भेदभाव बरतने को कानूनी जुर्म करार दिया गया। वैसे छुआछूत बरतना इससे पहले ही अपराध घोषित हो गया था, पर चूंकि इस कानून को कड़ाई से लागू नहीं किया जा रहा था, इसीलिए इसका दायरा और बढ़ाना जरूरी समझा गया। इस बात से इनकार करना कठिन है कि तब से दलितों के उत्पीड़न में कमी हुई है। श्रीमती गांधी के कार्यकाल में ही अनेक ऐसे कानून लागू किए गए जिन्होंने हिंदुस्तानी समाज में लिंग भेद के आधार पर गैर बराबरी को दूर करने में मदद की। इनमें से एक समान काम के लिए समान वेतन वाला अधिनियम है, जिसके लागू होने के बाद से मालिक स्त्री और पुरुष मजदूर के बीच मजूरी के मामले में भेदभाव नहीं बरत सकता। श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए और बहुत सारे कानून भी लागू किए गए। ग्रामीण विकास के लिए जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज व्यवस्था और समेकित ग्रामीण विकास परियोजनाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह सच है कि आज भी हमारे समाज में गैर बराबरी बची हुई है और कई बार शर्मनाक ढंग से सामने आती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि देहात में दलितों या पिछड़ों का शोषण और उत्पीड़न समाप्त हो गया है। शहरों में भले ही जाति या वर्ण पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रहे, पर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बची हुई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस दौर में उपभोक्ता संस्कृति के प्रसार से यह जोखिम बड़ा है कि समता और समाजवाद के सिद्धांत को एक साथ खारिज कर दिया जाए। सोचने की बात यह है कि ऐसा करने के बाद क्या हम अपने लोकतंत्र को बचाए रख सकेंगे? ट्रेडिशनल हमारा जो समाज है उसके अंदर भी बहुत इनइक्वालिटी थी, बहुत अनइक्वल सोसाइटी थी पहले से ही इंडिया। और ऐसा कहा जा रहा था कि इसलिए हम ऐसी नीतियां अपनाएंगे जिससे वो असमानता कम होगी
और नीचे नीचे के स्तर के लोग ऊपर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता गैप कम होगा, उल्टा हुआ। हमने आधुनिकीकरण और मॉडर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए इनइक्वालिटीज बढ़ाई है, कम नहीं करी। तो आज दोनों किस्म की इनइक्वालिटीज है। फ्यूडल स्ट्रक्चर जो है देश का गाँव में, उसकी इनइक्वालिटी है, बॉन्डेड लेबर वगैरह वगैरह, और उसके ऊपर आपने आपकी अपनी इनइक्वालिटी लगा दी कि ऊपर का एक अर्बन एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग मिडिल क्लास को सब सहूलियतें मिली और बाकी का देश हो गया। तो ये खास हमारे सामने समस्या है। ऐसा समाज बनाए कि जिसमें समता हो, जिसमें इगैलिटेरियनिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बने। तो एक किस्म से एक सामाजिक क्रांति की भी ज़रूरत है, ऐसा महसूस किया था। और राजनीति इस तरह बने कि जो अपनी नीतियों से समता की ओर बढ़े और साथ साथ जो पिछड़े हुए लोग हैं, वर्ग है, उनको एक विश्वास दिया जाए, उनको एक कॉन्फिडेंस दिया जाए, जिससे वो भी ये सामाजिक क्रांति में हिस्सा लें। समता, समाजवाद और लोकतंत्र के आपसी रिश्ते के महत्व को समझते हुए ही भारत के संविधान के 42वें संशोधन के बाद इसकी प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं। इसका अर्थ है कि इसके बाद से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के साथ धर्म या मजहब के आधार पर भेदभाव या गैर बराबरी का आचरण नहीं किया जा सकता, और इसी तरह आर्थिक जीवन में आर्थिक हैसियत के आधार पर भी एक नागरिक को दूसरे नागरिक से श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं समझा जा सकता। इसी कारण भारत के नागरिक को बराबरी दिलाने के लिए भारत के संविधान में अवसर की समानता और हैसियत की समानता की बात की गई है। हमारे लिए यह समझ लेना महत्वपूर्ण है कि समता के आदर्श को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र एक कारगर औजार है। मैम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। नमस्कार मैम। हाँ बताइए। मैम आप हमें जल्दी से प्रवाल शब्द का अर्थ बता दीजिए। अच्छा, जल्दी से। जी हाँ मैम, आज हमें कुछ शब्दों के अर्थ का पता लगाना है। ज्योति मैम ने कहा था कि पुस्तकालय में जाके देखना। जब आप पुस्तकालय में आए हैं और शब्दों का अर्थ खोजना चाहते हैं तो क्यों ना हम आपको शब्दकोश से इसके अर्थ बताएं। लेकिन मैम हमें तो शब्दकोश देखना ही नहीं आता, तो आज आप हमें शब्दकोश के बारे में बताइए ना। बिल्कुल ठीक। तो आज हम पहले आपको शब्दकोश दिखाते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं। ये देखिए, यहाँ हैं हमारे सारे शब्दकोश। अब देखो, जैसे इसे हिंदी में शब्दकोश और अंग्रेज़ी में डिक्शनरी कहते हैं। इसमें शब्द के बारे में बहुत तरह की जानकारी मिलती है, सिर्फ अर्थ का ही पता नहीं लगता, यहाँ तक कि शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, और वह मूल रूप से किस भाषा से आया है इसका भी पता आपको शब्दकोश से ही लगता है। अब जैसे इसमें से हम कोई शब्द लेते हैं, कोई भी शब्द ले लेते हैं, जैसे अंतरिक्ष ले लेते हैं। ये देखो अंतरिक्ष है, ये देखो यहाँ लिखा है अंतरिक्ष, इसके साथ लिखा है पु, मतलब ये पुल्लिंग शब्द है, ये संज्ञा है, और फिर उसका अर्थ दिया है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का स्थान। एक और अर्थ है आकाश। कितने अर्थ इससे पता लगते हैं? अच्छा, कौन सा शब्द तुमने पूछा था? जी, प्रवाल शब्द पूछा था। अब प्रवाल का अर्थ ढूंढते हैं। देखो प्रवाल कहाँ होगा? प्रवाल ये देखो प्रवाल, ये रहा। यहाँ देखो ये लिखा है प्रवास, प्रवाल। प्रवाल के साथ लिखा है पुल्लिंग, संज्ञा। संज्ञा और पुल्लिंग, अर्थात ये शब्द संज्ञा है और पुल्लिंग इसका लिंग है। अब इसके अर्थ देखो, तुमने अर्थ पूछा था, इसके अर्थ देखो कितने हैं। द्वीप वलय, मूंगे की बनी चट्टानों का वृत्ताकार संयोजन जो समुद्र के जल की सतह से ऊपर निकला रहता है तथा उसके बीच में पानी मौजूद रहता है। ये इसका अर्थ इसमें विस्तार से दिया गया है। कितने अर्थ मिल गए एक प्रवाल शब्द के? तो है ना ये शब्दकोश मजे की चीज़। शब्दकोश की जरूरत ही क्यों पड़ती है? कठिन शब्द के अर्थ तो कक्षा में ही बता दिए जाते हैं। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन हर समय तो टीचर आपके साथ नहीं होते ना। कई बार कोई पत्र पत्रिका पढ़ते हुए, अखबार पढ़ते हुए ऐसे कई शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें ठीक से मालूम नहीं होता, और जब अर्थ ठीक से मालूम नहीं होता तब न तो बात पूरी समझ में आती है, न ही पढ़ने का मज़ा आता है।
और फिर नए शब्दों को जानना अच्छा भी तो लगता है ना। हाँ जी, इस तरह तो हमारे शब्दों का भंडार भी बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक, इसे तो कहते ही हैं शब्दों का खजाना। लेकिन इस खजाने की खोज किसने की? यानी पहला शब्दकोश कब और कैसे बना? उपलब्ध जानकारी के अनुसार पहली डिक्शनरी सन 1225 में लैटिन भाषा में बनी। लैटिन भाषा में डिक्शनेरियस का मतलब होता है शब्दों का समूह। आज डिक्शनरी को जिस रूप में हम देखते हैं, प्रारंभ में ये वैसी नहीं थी। तब शब्दों के अनुसार नहीं बल्कि चीज़ों के अनुसार इसका निर्माण किया गया था। जैसे एक समूह में फलों के नाम, एक समूह में फूलों के नाम, किसी समूह में कपड़ों के नाम तो किसी में जगह के नाम। हिंदी में पहला कोश सन 1892 में बांकीपुर पटना से श्री बाबा बैजूदास का विवेक कोश नाम से प्रकाशित हुआ। उसके बाद कुछ और प्रयास भी हुए। गौरी नागरी कोश, मंगल कोश, श्रीधर कोश निकाले गए। सन 1909 में काशी की नागरी प्रचारणी सभा के प्रयत्नों से एक व्यवस्थित हिंदी शब्द सागर नाम से कोश तैयार हुआ। आज नागरी प्रचारणी सभा का संक्षिप्त हिंदी शब्द सागर और ज्ञान मंडल लिमिटेड वाराणसी का बृहत हिंदी कोश सर्वमान्य है। अब तो दूसरे भी कई कोश उपलब्ध हैं। मैम, मैं तो शब्दकोश में शब्दों का अर्थ ढूंढने में बहुत समय लगता है, बस पन्ने ही पलटते रहो। शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं है। शब्द ढूंढने का एक ख़ास तरीका होता है। किसी भी भाषा के शब्दकोश को देखने के लिए उसके वर्णक्रम को जानना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे अंग्रेज़ी में अल्फ़ाबेट्स और हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। तो ज़रा हिंदी की वर्णमाला को दोहरा लें। अगर वर्णमाला और सभी प्रकार की मात्राओं का ठीक से ज्ञान हो तो किसी शब्द को ढूंढने के लिए एक एक पन्ना पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हिंदी शब्दकोश की एक निश्चित वर्ण योजना होती है। अ से औ तक स्वर होते हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं, और उसके बाद व्यंजन आते हैं। फिर इसमें संयुक्त अक्षर, अनुस्वार और मात्राएं भी होती हैं। इसीलिए इसकी एक निश्चित वर्ण योजना होती है। इस निश्चित वर्ण योजना को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे बच्चों, कोश के वर्णक्रम में पूर्ण अक्षर से पहले चंद्र बिंदु और अनुस्वार चिन्ह आते हैं, जैसे हंस, हंस, हस। और आधे अक्षर यानी संयुक्त अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद में आएंगे, उसकी सारी मात्राओं के खत्म होने के बाद। जैसे हम क अक्षर को लेते हैं, क में आखिरी मात्रा होगी
कौ की। तो हम देखें इसमें कौ की मात्रा में अंतिम शब्द कौन सा आता है, ये देखते हैं, ये रहा कौहर, कौहा। अब कौहा के बाद औ की मात्रा से और कोई दूसरा शब्द नहीं है, यहाँ आकर के ये मात्रा खत्म हो जाती है। तो अब आधा क प्रारंभ होगा और इसके बाद देखो यहाँ से नए शब्द जो आधे क से शुरू होते हैं। यानी कौहा के बाद आएंगे क्या, क्यार और क्रंदन। और इसी प्रकार संयुक्त अक्षरों का वर्णक्रम उनके घटकों के क्रम पर निर्धारित होता है। जैसे हम कोई शब्द लेते हैं कक्षा, कक्षा में क्ष वर्ण है, ये किनके मेल से बना है, आधा क और श। इसी तरह विद्यालय का द, ये द अक्षर कैसे बना है, आधा द और य। तो इस तरह हम किसी भी वर्ण की वर्ण योजना तैयार करते हैं। अब हम किसी की वर्ण योजना तैयार करें, चलो क अक्षर लेते हैं। क की वर्ण योजना होगी शब्दकोश में शब्द ढूंढने के लिए शब्द की सही स्पेलिंग यानी उसकी वर्तनी को सही रूप से जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलो हम कोई शब्द ढूंढते हैं। क अक्षर से कैंची शब्द ढूंढो, ढूंढ के दिखा सकते हो मुझे? लो ढूंढ कर बताओ। इसमें कोने में जो शब्द दिए गए हैं, कोने में ये शब्द दिए गए हैं, उसे ध्यान दे करके तब देखना। संज्ञा और स्त्री, ये संज्ञा है और स्त्रीलिंग। मैम यहाँ लिखा है कैंची शब्द तो स्त्रीलिंग है, तो कोष्टक में तो तू लिखा है। इससे पता लगता है कि यह शब्द तुर्की भाषा से आया है। एक साथ कितनी जानकारी, इसी से अनुमान लगा सकते हो कि शब्दकोश हमारे लिए कितना उपयोगी है। देखो बच्चों, जब तक इसमें से तुम लोग कुछ और शब्द निकालो, मैं कुछ और शब्दकोश लेकर आऊँ। हाँ, तुम्हारे लिए भी देते हैं। तुम्हें ये लो, ये भी एक शब्दकोश है। इसमें से आप अपने नाम का अर्थ ढूंढो। चलो कैसे निकलेगा? मैम ने बताएंगे ऐसे अंबर यानी अ में देखते हैं शब्द। नहीं यार, अंबर अ से पहले आएगा। मैम ने बताएंगे था अनुस्वार शब्द पूर्ण शब्द से पहले आते हैं, तो फिर वो पहले आएगा। चल फिर प्राचीन, ये मतलब वी, इसका मतलब ये विशेषण है और स संस्कृत भाषा से लिया गया है। अंबर, अंबर ये रहा, यह संज्ञा और पुल्लिंग है और इसका अर्थ है आकाश, वस्त्र, परिधि, एक सुगंधित खनिज। अच्छा बच्चों, अब यहाँ देखो, शब्दकोश भी कई प्रकार के होते हैं। इनमें से प्रमुख हैं एक भाषा कोश। जब एक भाषा से उसी भाषा में उसका अर्थ दिया जाए, जैसे अंग्रेज़ी से अंग्रेज़ी में या हिंदी से हिंदी में, या फिर किसी भी भाषा से उसी भाषा में उसका अर्थ बताया जाए, तो वह एक भाषा कोश कहलाता है। इसी तरह द्विभाषा कोश, जहाँ एक भाषा से दूसरे भाषा में उसका अर्थ बताया जाए, जैसे अंग्रेज़ी से हिंदी में या फिर हिंदी से अंग्रेज़ी में या फिर किसी भी एक भाषा से दूसरी भाषा में। यह है आपकी द्विभाषा कोश, इसमें हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं की है। और ये है बहुभाषा, इसमें 3 भाषाएं हैं, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। इसी तरह से ये भी बहुभाषा कोश है, इसमें हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी ये शब्द हैं। और उसके बाद अब आपको हम दिखाते हैं ये समांतर कोश। ये आपका थिसॉरस है, ठीक है, देख रहे हो, थिसॉरस। इसमें शब्द की बहुत सारी बातों के बारे में बताया जाता है। एक ही भाषा में शब्दों के पर्याय, उसके मिले जुले शब्दों और रूपों की सूचना जहाँ मिलती है, उसे थिसॉरस कहते हैं।
एक भाषा कोश का उदाहरण अभी हमने कैंची शब्द में देखा था ना। अब देखो जैसे कि ये अंग्रेजी हिंदी कोश है, इसमें 2 भाषाएं हैं, द्विभाषा कोश कहते हैं इसे। अब जैसे हम इसमें कोई एक ले लेते हैं शब्द, इंग्लिश का एक शब्द लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, तो ये आएगा SUVWX, UVW विंड, विंड वाटर, इससे पहले आएगा वाटर, ये रहा, देखो ये वाटर लिखा है जल। अब आप देखिए इसमें ये सारे अर्थ हैं ना, ये द्विभाषा कोश हुआ। अब मैं आपको बहुभाषा कोश दिखाती हूँ जिसमें कि आपको एक से अधिक भाषाओं में, अब जैसे ये है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेज़ी, इन 3 भाषाओं में है। अब जैसे इसी में हम जल शब्द ले लेते हैं, हमने वाटर लिया था ना, अब ये ज आएगा च छ ज जल जल, ये देखो यहाँ लिखा है जल, ये देखो है ना। अब इसमें है ना, इसमें हिंदी में भी है और फिर अंग्रेज़ी में भी है, तो ये आपका बहुभाषा कोश हो गया। और आपको इसी में मैं एक और शब्दकोश दिखाती हूँ, ये देखो, ये हिंदी, गुजराती और अंग्रेज़ी, ये 3 भाषाएं हैं ना। तो इसी में जैसे हम इसमें भी हम जल लेते हैं, देखो इसमें भी जल होगा, जल। अब देखो यहाँ जल का अर्थ कैसे दिया हुआ है, पहले तो पुल्लिंग, उसके बाद फिर पानी हिंदी में बताया, और ये देखो गुजराती में लिखा है ना, है ना मज़े की, इसके अंदर गुजराती में बताया, फिर इंग्लिश। अब देखो आपको और एक मज़ेदार चीज़ दिखाते हैं, है ना, ये भी हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये थिसॉरस है, कभी आपने थिसॉरस देखी थी? नहीं। ये देखो थिसॉरस में क्या होता है, इसमें वर्ण क्रम के अनुसार नहीं देखते, बल्कि इसमें विषय सूची के आधार पर शब्दों को खोजा जाता है। अब जैसे हम इसमें शब्दकोश लेंगे, हम इसमें कुछ खोजना चाहेंगे तो हम पहले इसका क्रम देखेंगे, यहाँ से विषय सूची देखेंगे। अब जैसे विषय सूची है, इसमें हम देखते हैं ब्रह्मांड है, पिंड कथा है, सौरमंडल है, आकाश, चलो आकाश देखते हैं। अब दूसरे नंबर पर आकाश है, ये ब्रह्मांड आया, ये आकाश आया। अब इसमें आकाश के बारे में सोचें, इसमें आकाश के बारे में न केवल उसके पर्याय हैं, उससे मिले जुले जितने भी शब्द हैं उन सब के बारे में पूरा आकाश एक साथ होगा। दिक्कत नहीं हुई ना, इसमें तो खूब पन्ने पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बच्चों अब तक तुम्हें अनुमान लग ही गया होगा कि शब्दकोश हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसका जितना उपयोग तुम लोग कर सकोगे उतना ही इसका लाभ उठाओगे। जब हम शब्दकोश की बात करते हैं तो मुझे अमीर खुसरो द्वारा रचित एक पद्य संग्रह का ध्यान आता है, खालिक बारी। इसमें अरबी फारसी के शब्दों का ब्रज भाषा में अर्थ दिया गया है, इसीलिए यह पुस्तक बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई। आतिश आग, आब ही पानी, खाक धोर जो बाद उड़ानी। इसकी प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय में भी देखी जा सकती है और कुछ लोग इसे बहुत पुराने कोशों में से एक मानते हैं। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर पद्य प्रचलित है, इकलख ऊंट सवालख गारी, तिस पर लादी खालिक बारी। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतना लोकप्रिय हुआ कि 1.5 लाख गाड़ियों पर इसकी प्रतियां बंटवाई गई। है ना मजे की बात। तो अब शब्दकोश में शब्द ढूंढने में मजा आएगा ना। चलो इसमें से हम कुछ नए नए शब्द ढूंढते हैं। तुम लोग ढूंढ सकते हो ना शब्द? चलो आज यही खेल खेलते हैं। आज आप लोगों को मैं, ये लो, इसमें अंग्रेजी के शब्द ढूंढो और तुम्हारे पास ये है, इसमें हिंदी के, और इसमें से चलो सब लोग अपने नाम ढूंढो या कोई भी नए नए शब्दों के अर्थ खोजो। वे पुष्प शुष्क है अथवा झुलसे। सुभद्रा कुमारी चौहान एक स्वतंत्रता सेनानी, स्वाधीनता आंदोलनों में भाग लेने वाली प्रथम महिला। इनका हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में एक विशेष स्थान है। ये राष्ट्रीय कवयित्री के रूप में सम्मानित हैं। इन्हें अमरत्व प्रदान करने वाली ऐतिहासिक कविता है झांसी की रानी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी।
गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जन जागरण की मशाल ये कविता आज भी अपनी अलग पहचान रखती है। देशभक्ति के साथ-साथ इनकी कविताओं में मातृत्व के निश्चल सहज अनुभव हैं, तो दूसरी ओर इनके विद्रोही स्वभाव में समाज की बुराइयों, रूढ़ियों का तीव्र विरोध करने का अदम्य साहस था। परिवार, समाज, देश सेवा और काव्य, कितना कुछ समाहित था उस एक अकेले व्यक्तित्व में। हर व्यक्तित्व की एक कहानी होती है और उसकी शुरुआत भी। सुभद्रा जी का जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह और मां धीराज कुंवरी। इनका बड़ा बेटा राम अवतार सिंह, छोटा बेटा राम प्रसाद सिंह और सबसे छोटा बेटा राज बहादुर सिंह। इनकी 5 बहनें थीं। सुभद्रा जी इनमें से एक थीं। उस समय का समाज पिछड़ा हुआ था। छोटी उम्र से ही लड़की का घर से निकलना, झूला झूलना, छत पर जाना, इस सब की मनाही थी। पर राज बहादुर सिंह यानी छोटे भैया अपनी सब बहनों को पढ़ाना चाहते थे। उनकी प्रेरणा से ही बहनों में कविताएं लिखने की प्रतिभा अंकुरित हुई। यह बात है सन 1913 की। सुभद्रा जी तब सिर्फ 9 साल की थीं जब इनकी पहली कविता नीम मर्यादा पत्रिका में छपी, सुभद्रा कुंवरी के नाम से। इस तरह से इनके जीवन में कविताएं लिखने और पत्र पत्रिकाओं में छपने की शुरुआत हुई। इन्हीं दिनों सुभद्रा जी अपनी बहनों के साथ क्रॉस्थवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ने जाने लगीं। सुभद्रा जी इक्के पर आते जाते कविताएं लिखती। सन 1917 से सुभद्रा जी उसी स्कूल के बोर्डिंग हाउस में रहने लगीं। वहां महादेवी वर्मा जी भी पढ़ने के लिए आईं और दोनों अभिन्न सखियां बन गईं। दोनों कविताएं लिखती थीं, पर दोनों की कविताओं में बहुत अंतर था। सुभद्रा जी की कविताओं में सरल, सहज लोक जीवन की भाषा, महादेवी जी की कविताओं में थी अंतर्मुखी रहस्यमयी शैली। पर मित्रता दोनों कवयित्रियों ने अंत तक निभाई। 20 फरवरी 1919 को इनका विवाह लेखक लक्ष्मण सिंह से हुआ। विवाह बिना दहेज के, बिना घूंघट के बहुत साधारण ढंग से संपन्न हुआ था। लक्ष्मण सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे मैथिली शरण गुप्त की देशभक्ति की रचनाएं पढ़ते और सुनते। कांग्रेस के कार्यों में स्वयं सेवक बनकर हिस्सा लेते थे। सुभद्रा जी में देश प्रेम जगाने और लेखन में रुचि पैदा करने में लक्ष्मण सिंह ने पूरा सहयोग दिया। यह समय था आजादी के संघर्ष का, राजनीतिक उथल-पुथल का। उन दिनों अंग्रेज सरकार भारतीयों के दमन के लिए नए-नए तरीके अपना रही थी। इस सरकार ने सन 1919 में रॉलेट एक्ट बनाया, जिसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। इसके विरोध में जब 13 अप्रैल सन 1919 में
जलियांवाले बाग में सभा हो रही थी तो वहां ब्रिटिश अफसर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। तब सारा देश दहल उठा। प्रबल आक्रोश था हर क्रांतिकारी के हृदय में। सुभद्रा जी इस घटना से बहुत आहत हुई। इसका दर्द अभिव्यक्त हुआ उनकी जलियांवाले बाग में बसंत कविता में। यहां कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुलसे, शुष्क हैं अथवा झुलसे। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है। हा यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यह है शोक स्थान, यहां मत शोर मचाना। इस अत्याचार के विरुद्ध लोगों में आक्रोश असहयोग आंदोलन के रूप में उभरा। सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लक्ष्मण सिंह और सुभद्रा जी ने भी पढ़ाई छोड़ दी। दोनों ने देश सेवा का व्रत लिया। 1920 में दोनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन गए। सुभद्रा जी स्त्रियों में संघर्ष का संदेश, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना, पर्दा छोड़ना, छुआछूत की भावनाओं के बहिष्कार को बढ़ावा दे रही थीं। इन्हीं दिनों माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर में कर्मवीर पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। लक्ष्मण सिंह इसके संपादन का कार्य करते थे। तब सुभद्रा जी का भी साहित्यकारों से परिचय होता था और उनके लेखों और रचनाओं को पढ़ने का अवसर सुभद्रा जी को मिलता था। दिसंबर 1921 में सुभद्रा जी और लक्ष्मण सिंह अहमदाबाद कांग्रेस अधिवेशन में गए, जहां गांधी जी से सुभद्रा जी का परिचय हुआ। साबरमती से जबलपुर पहुंचकर फिर सुभद्रा जी ने कांग्रेस के प्रसार प्रचार का कार्य संभाला। लक्ष्मण सिंह ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया। दोनों साइकिल पर कांग्रेस का कार्य करते। कभी कभी सुभद्रा जी अपने पति के साथ साइकिल पर 14 किलोमीटर की दूरी तय करके भेड़ा घाट घूमने के लिए जाती। शायद वहां से ही मिला होगा उन्हें रूढ़ियों को तोड़ने वाला चट्टान जैसा मन, जिसके अंतस में बहती थी ममता और करुणा की सुकोमल भावधाराएं। सन 1922 में झंडा सत्याग्रह जबलपुर में म्युनिसिपल कमेटी से शुरू किया गया। यह था जबलपुर का पहला झंडा सत्याग्रह और सुभद्रा जी बनी पहली महिला सत्याग्रही। जबलपुर के बाद झंडा सत्याग्रह शुरू किया गया नागपुर में। असहयोग आश्रम से सत्याग्रही जुलूस में निकलते और गिरफ्तार कर लिए जाते। कांग्रेस द्वारा जगह जगह सभाएं की जाती, भाषण दिए जाते। नागपुर की विधानसभा का टाउन हॉल सुभद्रा जी का भाषण सुनने के लिए खचाखच भर जाता। सुभद्रा जी अपने भाषण के बीच बीच में जोश से भरी कविताएं सुनाती थीं, जैसे झांसी की रानी। मेरी उम्र रही होगी 20 साल जब मुझे पहली बार ये कविता 9वीं कक्षा की लड़कियों को पढ़ाने का मौका मिला। तो उस अवसर पर मेरे दिमाग में ये बात कौंध गई कि इससे ज्यादा जबरदस्त शुरुआत मुझे जीवन में किसी कृति की दिखने वाली नहीं है। कोई भूमिका नहीं, कोई माल्यार्पण नहीं, कोई सम्मान नहीं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो कथ्य है उसको पूरे आत्मविश्वास के साथ बगैर किसी भूमिका के उद्घाटित करने वाली पंक्ति है। जो दूसरी पंक्ति का आशय है
वो इसकी शुरुआत से प्रकट हो जाता है कि एक जिस तरीके से ये कविता शुरू होती है और आप इसकी चौथी पंक्ति तक आते आते एकदम डूब जाते हैं एक ऐसी स्थिति में जहां पर आसमान फट गया है और आपको लगता है कि कोई ध्यान देने लायक घटना घट गई है। ये आप समूची कविता अगर देखें तो आप पाएंगे कि ये कविता हिंदी के एक बहुत प्रांजल रूप का हमारे सामने एक बड़ा निराला उदाहरण रखती है। और जहाँ तक अलंकार शास्त्र की, ध्वनि शास्त्र की, बिंबों की रचना की बात है, या कि अगर आप इसको कहानी की कला के हिसाब से तौलें तो जो गति का सवाल है, इन सभी पैमानों पर यह कविता एक लेखक के रूप में मुझे हमेशा कुछ न कुछ सिखाती रहती है। उनकी यह कविता जब्त कर ली गई थी। फिर एक बेटी का जन्म, जैसे इनका बचपन लौट आया था। ये मातृत्व बदलाव लाया इनकी काव्यधारा में भी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन सी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे बच्ची, बहुत सुंदर कविता उनकी है। उसका भाव यह है कि एक बच्ची का आना मानो मेरे लिए बचपन का लौट आना है। तो जो बचपन चला गया उसके लौट आने को एक बच्ची के रूप में अपने आंगन में महसूस कर रही हैं। अब ये लौट आना एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भी है। जो हमारी आज़ादी चली गई थी, जो हमारे आंगन का वो जो स्वाधीनता का एक फलता फूलता पौधा सूख रहा था औपनिवेशिक साम्राज्य के आने से, वह अब लौटने वाला है। जैसे बच्ची आई है जीवन में, परिवार में, एक मेरे गए हुए बचपन को वापस लाने का एहसास करा रही है, ऐसे ही मेरे देश के आंगन से जो कुछ चला गया था वह वापस आने की एक आकांक्षा इस कविता में प्रकट होती है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कविताएं लिखी जो बच्चों के साहित्य की अनमोल धरोहर हैं, जैसे कोयल, पानी और धूप, खिलौने वाला, कदम्ब का पेड़, सभा का खेल, अजय की पाठशाला इत्यादि। कदम्ब का पेड़ आज भी पाठ्यचर्या का हिस्सा है। यह कविता उनकी बालचित्त वृत्तियों की परख का एक उत्कृष्ट नमूना है। यह कदम का पेड़ अगर मां होता जमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली। उन्होंने जितनी सुंदर कविताएं लिखी उतना ही सुंदर उन्होंने गद्य साहित्य, कथा साहित्य लिखा। उनके कथा साहित्य का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि उनके पास एक निश्चित कार्यक्रम था। उनके सरोकार बड़े व्यापक थे। राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम में वे सक्रिय रूप से भाग भी लेती रहीं और उस भावना को कविता के माध्यम से वाणी भी देती रहीं। इसके अतिरिक्त स्त्रियों का उद्धार और उसके साथ साथ दलितों का उद्धार भी उनके एजेंडा पर बहुत प्रमुख जगह रखते हैं। उनकी तमाम कहानियाँ स्त्रियों के दुख दर्द से प्रेरित हैं। उनके अपने प्रयास निजी जीवन में और उनकी रचनाएं दलितों के बारे में गहरी संवेदना और सरोकार का परिचय देती हैं। सन 1928 में इलाहाबाद से सुभद्रा जी की कविताओं का संग्रह मुकुल प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें सेक सरिया पुरस्कार दिया गया। उस समय यह पुरस्कार महिला लेखिकाओं के लिए निश्चित किया गया था। इनका काव्य लेखन आजादी के संघर्ष से जूझते हुए भी निरंतर गतिशील रहा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, गांधी जी की प्रसिद्ध डांडी यात्रा से। इधर जबलपुर में लक्ष्मण सिंह ने एक आम सभा में जनता का आह्वान किया और गिरफ्तार किए गए। इसी दौरान सुभद्रा जी ने सामाजिक सच्चाइयां उभारने वाली कहानियां लिखीं। कहानी संग्रह का नाम था बिखरे मोती।
इसे भी हिंदी साहित्य की ओर से शेखसरिया पुरस्कार दिया गया। उनकी कहानियां पाठक की उंगली पकड़कर हर दृश्य की सहजता का भागीदार बनाते हुए आगे बढ़ती हैं। उनकी कहानियों के एहसास को नए अंदाज में समझा भी गया है। उनका तेज इस प्रकार का था कि शायद 2021 में जो पहली महिला असहयोग करने वाली नेता थी और जेल जाने वाली पहली स्त्री असहयोग कार्यकर्ता वो सुभद्रा जी थी। तो सक्रिय स्वाधीनता आंदोलन में और सक्रिय रचनात्मक साहित्य में एक साथ उन्होंने प्रगति किया। और ये चीज़ आज जब स्त्री मुक्ति के आंदोलन दुनिया भर में और ख़ास तौर से हिंदुस्तान जैसे पिछड़े हुए समाजों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तब इस चीज़ का महत्व और इसकी प्रासंगिकता और ज़्यादा हमारे लिए हो जाती है। 1932 में अछूतोद्धार की समस्या के निदान के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए गांधी जी पूरे देश के दौरे पर निकल पड़े। जबलपुर भी आए। सुभद्रा जी ने इसका संदेश घर घर पहुंचाया। सन 1936 में यह विधानसभा की सदस्या चुन ली गई थीं, जिसकी पुष्टि सरदार पटेल ने एक पत्र से की थी। जबलपुर में सुभद्रा जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में वे अकेली राजनीतिक बंदिनी थीं। उनकी जेल की डायरी में कुछ इस तरह का सच लिखा था। आज लालटेन में तेल नहीं है, कुछ न लिख सकूंगी। मैं जल्दी जल्दी कुछ लिख देना चाहती हूं, क्योंकि लालटेन दम तोड़े दे रही है। आज भी करीब करीब कई मानों में उसी प्रकार के परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के संदर्भ में श्रीमती सुभद्राबाई चौहान ने अपना संघर्ष किया था। कविताओं की श्रृंखला से पता चलता है कि प्राय उन्होंने प्रत्येक मानवीय पहलू को छुआ है, चाहे वो वात्सल्य का हो, करुणा का हो, पारिवारिक संबंधों का हो, और सब में वही निश्चल चरित्र झलकता है। राष्ट्र को ऐसे ही महान व्यक्तियों की प्रेरणा की आज आवश्यकता है। 1945 में सुभद्रा जी फिर विधानसभा की सदस्या चुन ली गईं। समाज के कार्यों को पूरा करने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। पर नियति को कुछ और मंजूर था। 15 फरवरी 1948 के दिन नागपुर में शिक्षा विभाग की सभा में शामिल होने के बाद जबलपुर लौटते हुए मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। 1949 में जबलपुर शहर में नगर पालिका भवन के प्रांगण में उनकी प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई। तब महादेवी जी ने कहा था, नदियों का कोई स्मारक नहीं होता, दीपक की लौ को सोने से मढ़ दीजिए, इससे क्या होगा। हम सुभद्रा के संदेश को दूर दूर तक फैलाएं और आचरण में उनके महत्व को मानें, यही असली स्मारक है। उनका लेखन केवल साहित्यिक दृष्टि से उत्कृष्ट है ऐसा नहीं है, उसमें जो उनकी सामाजिक चिंताएं हैं, विशेष करके जो महिलाओं के प्रति और उनके अधिकारों के प्रति जो उनकी सजगता है, वो आज जो 50, 60, 70 वर्ष बाद जो नया चिंतन सामने आ रहा है, उसमें से कई चीज़ों की उन्होंने इसके पहले ही चिंता व्यक्त की थी और उसको उसके लिए जागृति के लिए उन्होंने सोचा था।
सुभद्रा जी जैसी कोई दूसरी लेखिका नहीं है जिन्होंने उस दौर में महिलाओं की करुणा को, उनकी पीड़ा को, उनकी सहृदयता को आवाज़ दी हो। हम जब उन्हें याद करते हैं तो एक पूरा प्रसंग याद आता है इतने वर्षों का। कम अवधि तक वे जिंदा रहीं, लेकिन जितने दिन रहीं उनका काम यश से भरा हुआ है और कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी मृत्यु के बाद हिंदी के दो बड़े कवियों ने जो ट्रिब्यूट किया है, जो श्रद्धांजलि दी है, एक शमशेर जी ने और दूसरी मुक्तिबोध जी ने, तो वो दोनों अद्भुत हैं। मतलब एक प्रेम और सौंदर्य का कवि उनको उसी ताप से याद करता है, और दूसरी तरफ प्रतिबद्धता, वैचारिक कठोरता का मुक्तिबोध जैसा कवि भी उनको उसी तरह से याद करता है। सबसे बड़ी प्रेरणा तो यही हमको मिलती है कि उन्होंने एक ऐसी सुंदर कविता लिखी जो कि झांसी की रानी, जो कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है, और जो कि हम सबों को इस टाइम में, इस भारतवर्ष में जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, राष्ट्रीय चेतना। हम सभी के राष्ट्र हैं और अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार रहें और बहादुरी से जीवन व्यतीत करें, और यही इस टाइम की चेतना है जो कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उस टाइम में। जो एक पहली स्त्री होते हुए, जो फर्स्ट स्त्री थी जो कि वो कविता की लाइन में मेरा ख्याल आई, जो उन्होंने राष्ट्र को, और उनको हम हृदय से प्रणाम करते हैं। सुभद्रा जी एक साधारण व्यक्तित्व में संजोए असाधारण गुण, सादगी और ममता की पहचान, एक ईमानदार देशभक्त, समाज सुधारक, कर्म के प्रति अटूट आस्थावान, एक उत्कृष्ट कवयित्री। आज जरूरत है हमें सुभद्रा जी के पद चिन्हों पर चलने की, आजादी के मायने एक बार फिर से समझने की, और एक मशाल बनकर देश के वर्तमान और भविष्य को आलोकित करने की। हम कृतज्ञ भारतवासी, ये तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। होंगे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो मदमाती विजय, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। Understanding the apparatus used for electrical circuits for doing lab work, that is very necessary. We have over here a battery eliminator. We need a battery for every circuit that we need to use for any purpose in the lab. The battery eliminator over here, the name suggests that instead of using a cell or a battery, you can easily use this. There is a plug attached to this which goes into the main socket, and the output is taken from these two. Because there is a DC output from here, you have a positive and a negative terminal. We have to be always careful and sure that we connect the right way. There is a knob provided in this which allows us to choose from 2 volts to 12 volts output. A pilot lamp which suggests that the eliminator is in working condition,
an on and off switch to allow us to choose when we wish to use the eliminator and when we need to turn it off. That is always when we are not making use of the circuit. Other than this, there is this input which is connected with a fuse, and in case the eliminator is not working, one of the surest problems is that the fuse must have gone. One of the important things that we need for making up a circuit in the lab is a connecting wire. What should be the property of a connecting wire? One, that it should not contribute any resistance so that the entire circuit resistance changes. So, it should be that of 0 resistance. Nothing can be of that, but we can try and make it as low as possible. The second important requirement for a connecting wire is that it should not give you any shocks, which means it should be insulated enough. The commonly used connecting wires in our labs are made up of copper. Copper is expensive and we should not waste any. So, cut the wire of the required length and use it in the circuit. How do we use it in the circuit? The wire end has to be clean. It should be the insulation which is provided by just putting a thread on it should be removed. The exposed portion should be straightened and cleaned with a sandpaper. What happens to copper is that some oxides develop on it, and because of that the connection may not be there, or it may change the value of resistance at the terminal point of connection. So, clean this section with sandpaper. Just doing it 2 or 3 times is sufficient. Thereafter, to make a clean neat connection, what you can do is hold the wire like this, with your finger and the thumb make a J like this, make a loop like this. What you can then do is put it in the terminal, and when you screw the terminal on, the connection is neat and tidy. There is really no need to take the wire round and round the terminal, and that way the wire will last for a longer time in the lab and be useful for many of your friends. One of the very important circuit elements is a key. A key, that means it is a switch, and whenever you want the current to flow, this will allow, otherwise no. Now, let us study its design. It has got a good conductor brass broad strip here with 2 terminals, and if you look carefully, there is a gap in between these 2. So, when you connect a terminal here and you connect the wire here, and this is open, that means there is nothing in this gap, that means the current can't jump across, it will not flow in the circuit. The current will flow only when we put this plug here. This gap is closed and the current will flow from this terminal to the other, or vice versa. So, the key can be connected in any order, that means there is no positive or negative for it, and you can have a system by virtue of which you can stop the current in the circuit and put it back in the circuit. There are many different types of switches, like the one that you use in your home, or else the ones that are used in the lab, which permit you to connect 1 or 2 circuits together. Many options are there, but this is the simplest one which you would be using most often in the lab. Important circuit elements are resistances. These are used in the lab and you will have to recognize because their functions are different. The commonest resistance that is used is a wired one like this, a shiny wire which is made out of an alloy, nichrome. The material is chosen because it does not change its resistance with temperature and can sustain the current steadily. Now, these wires are made with
uniform cross section, that means they are homogeneous in material as well as in diameter. The wire is sold by standard wire gauge, which is commonly known as SWG. The SWG depends upon the thickness of the wire, that means the diameter of the wire. So, if you have to use a wire of a particular value resistance, say for example, you want a 2 ohm resistance, all you will have to do is to choose for a wire for which SWG is known, that means the resistance per centimeter is known, and you will take the length according to that and connect it in your circuit. Then you have other resistances which are fixed resistances. For example, this is a 5 ohm resistance. It has got 2 terminals. It does not mean that it is red, so it should be positive, because a resistance wire does not have a positive or a negative. The current can go in this direction or the other, and it would not make any difference to the value of resistance. What is it inside this wire? Of course, a length of this, which is coiled up so that it can sit in a small space like this. For example, if I turned it open for you, you can see this coil, which is a loop made out of a wire of this type. So, providing a resistance in this particular case of say 5 ohms or 2 ohms, 10 ohms, and these resistances are commonly used in the lab. Other than this, you have to have fixed resistances where you can use by choice. You may use wires much the same way, but can you imagine if you wanted 1000 ohms? The length of the wire would be very, very big, and that has to be kept in a small box so that it is easy to handle. These kind of boxes are the resistance boxes, in which you have 2 terminals, and your choice can range from 1 ohm to about 10,000 ohms, which means there has to be very long lengths of wire. The way this works, the plug type, that when you remove this plug from here, the wire of a particular value will come into the circuit, because this is what you will put in the circuit. When you put it back here, the connection is through the good conductor, and therefore, the resistance wire is not going to be in circuit. The current will pass through this thick metallic brass structure. To help you understand a little more, I am opening this for you, and you can see very long lengths of wire, very thin wires are there, which are placed in a special way. This wiring is necessary because the coiling up has to be done in a particular way. Supposing this is a long length of wire, and you want to place it in such a way that it takes small space and does not influence the circuit in any other way. Other way of influence would be magnetic influence. So, non-inductive wiring or non-inductive looping of the wire, and it is done like this. The whole length is divided into half, placed this way. Thereafter, it is coiled. So, as you can see, if you have this coil, the current would be flowing in any section in one direction, and the closed section next to it would have current in the opposite direction. So, the magnetic field produced by one portion will be cancelled by the magnetic field produced by the other, and therefore, you have the wire offering only resistance and no magnetic influence around it. So, this becomes a very, very important standard resistance box. The material used for making this is constantan or manganese, again for the same reason that they can hold the resistance value at different temperatures, and therefore, they become very, very important. Another apparatus which is used in the lab which offers variable resistance is a rheostat. Now, notice in this rheostat you have this grey section, which is a wire, a long length of wire, some 50 meters or so, coiled up on a porcelain. This is a porcelain hollow,
and on that there is this coiling. The ends of the wire are connected to these two terminals. Other than that, there is this rod on which a slider moves, and there is a terminal here. So, in effect, in a rheostat there are 3 terminals, one at the 2 ends of the wire and one somewhere here, which is connected through this rod and through this connection. Notice this will tap the wire at any location depending upon how I slide it. So, you can connect these two if you want the full length of the wire in a circuit, or if you want the wire to do a variable resistance job, then you should connect this and any one of these two. Connecting this and this would mean that the current may enter here, go through all this resistance wire and be tapped by the good conductor here, and this good conductor offers a low resistance path. So, the current is emitting or coming out of, exiting from this rheostat at this point. So, these two terminals are being used. If I use this one and this, then what would happen? That I have the resistance offered by only this small portion of the coil, and thereafter the current flows in this section. Please note that this is used wherever you wish to change the resistance in the circuit and therefore change the current, and the choice is that you can choose it for any value of current requirement. These resistors are fixed, and therefore the current changes would be by fixed amount, not the way they are by a rheostat. So, all of them have a special use and are used in the circuits in the laboratory. In the laboratory, while using circuits, we need to take some measurements. So, we need instruments that will measure for us. Now, the measuring instrument has to have a principle on basis of which it works, and the instrument that we are using is a galvanometer, ammeter or a voltmeter. They all work on the simple principle that whenever a current carrying coil is placed in an external magnetic field, it develops a torque, which means that the strength of the torque will be governed by how much current passes through it. Making use of this principle, we have the galvanometer. In the galvanometer, the unique feature is that it has got a 0 center, and the pointer can deflect to the right or to the left. Therefore, whenever in circuit and the galvanometer is showing a deflection in a particular direction, and during the experiment if it changes to another side, that means the current in that section has changed its direction. It is highly important because many apparatus require this kind of expertise. You may also require to know from a galvanometer whether current is more or less than the previous value. That can also be shown by this. It is not going to show you a correct measure of the current, but it can show you more or less. When more current passes through it, the deflection may be to the extreme point. When less than that is there, then the deflection may be less than that. So, the divisions over here indicate the direction of current, the amount of current, and also whether current is there or not. If there is no current in a particular section of the circuit, this pointer will point towards 0, and we call it null deflection. However, if you require to measure the amount of current which is flowing in a section, that means how many amperes is the current there, then you need an ammeter. This ammeter is a modification of this basic galvanometer, which you will learn in your theory class. And what you have over here is a 0 at one end, and the pointer deflects only in one direction. The range of the ammeter is governed by the scale which is marked here. That means, for this particular ammeter, you can read from 0 to 1.5 amperes only. So, if there is a current value which is more than that, this particular meter would not be adequate. So, readings less than that will be read accurately
by using this meter. You will also require from this not only the range, the least count of this. The divisions marked over here are calibrated in such a way that you measure accurately your values of 1 ampere and 1.25 ampere or maybe 0.75 ampere depending upon the graduations provided. It is a good idea to study the scale, read the range value, read up how many divisions are there between any of the two big divisions, number of divisions there, and divide that value by the number of divisions to accurately find the least count. Likewise, you may need a voltmeter. The purpose of a voltmeter is to find the potential difference between any 2 points in a circuit, and therefore, the volts that it measures also requires a meter which will allow some portion of the current to pass through this, otherwise on principle it will just not work. So, some small current is made to pass through the voltmeter, and it is always placed in parallel to the points where the potential difference is to be measured. And so, 0 at one end and the extreme end of the scale gives you the range, and like I told you about the ammeter, the graduations over here will suggest how many volts is the potential difference. So, depending upon the value that is indicated by the pointer in any experiment, you will be using the least count and the divisions travelled by the pointer for that reading and find the reading for that value. There are digital meters available as well. Those do not work on this principle. Many labs have them now, but it is not necessary to use a digital one. A digital one is the type that the electrician brings to your home and puts it in the circuit and reads off by just the numbers appearing on it, and it tells you how many amperes, how many volts. Other than that, you also have a multimeter which combines the application of this and the device to measure resistance, and you can use those as well. But in normal practice, separate meters are used to take the value of current and voltage. This lecture has been, I was asked to give this lecture a couple of days ago, almost when I was not in Delhi but Lucknow, and I didn't know exactly what to do, how to pitch it, because I didn't know what the audience was going to be. But then I decided it doesn't make much of a difference because it's about real life, it's not about the frontiers of science. It's something to do with you though. It's something to do with this generation which is sitting on some kind of a spike, what is called a cusp. See, what's happening is that there's so much going on and so many things that are coming into our lives. You know, cell phones, PlayStations, everything. You know, the human body is becoming burdened by many, many things now. Everybody has to have, each one of us has to have one of each. But this is posing a bit of a problem because it's downloading a lot of waste on the planet, like electronic waste, like toxic wastes. And you all know what has happened. In India particularly, if you go to any of our rivers, either they don't run, or if they run with sewage. Right? And you expect something is going to happen because our Prime Minister says we are going to do something. But you know, even at the age of whatever, 14, 15, that nothing's going to happen in a hurry. Because it took a long time to spoil them, it's going to take a longer time to fix them. But you can't really fix them because these are kind of resources which are evolutionary resources. You know, if you take a river like the Ganga or the Yamuna, it was built after the Himalayas started 55 million years ago. Maybe it's been running for 30 million years ago. And that's how much time it took to make a river. So now you don't know what's going to happen to these rivers.
And the life in these rivers is never going to come back because it took 30 million years of evolution to make the life in the river. But there is something that's happened in science, and it has not to do with science as such, but how science is used. That in the last 50 years, let me start off with one thing, that recently there was a report published by the World Wildlife Fund. And the report, 5 years ago, the report said that about 30% of the species on this planet were close to extinction. This report, after 5 years, says that 52.5% of the species on the planet are extinct. Now, whether correct or not correct, it is actually an approximate, it's actually somewhat close to the truth. So, just to tell you, 74% of all the species in the rivers of the world have disappeared. And 40% of the species in the sea have disappeared, including all the big sharks and the whales. And 40% of the species on land have disappeared. Now, if you look at the planet, it's interesting how the planet works. You must have asked yourself the question. Have any of you asked yourself the question how you work? I mean, your body temperature, right? I mean, when you go home, I don't know, your mother, probably, more likely than your father, is going to ask you if you say you're not well, if you have fever. So what happens? You have something like, I think people are used to centigrade now, 37.8 degrees centigrade. And if it goes up by a degree, then you know you're not well. Have you ever asked yourself the question, when you have a blood test and something goes wrong in that blood test, the plasma, the blood plasma that you have, the trace elements that you have, how does the body manage to keep itself in this steady state, where the temperature, the pressures, everything is kept in a completely steady state? And if you go a little bit off, you get sick. If you go a little bit more off, then you get very sick. And if you get a little bit more off, then you're out of this world. You're not there anymore. Have you asked yourself the question how this works? I want to know an answer from the people here. The students particularly. Did you ever ask yourself the question how this miracle happens? Okay, nobody is saying anything. Maybe we'll move it to the question session. Okay. So if you ask yourself questions like that, then to maintain this steady state is not an easy thing. And we don't know. It's called homeostasis. We have a word for it, but we don't have an explanation for it. We don't even know how a single cell works. However, the same thing happens at the level of the planet. The planet has been kept in a steady state for a long time. Of course, we've had ice ages, we've had extinctions, but that's over millions and millions of years. The planet, by and large, otherwise, is in a steady state. So what keeps the air on this planet constant, 20% oxygen or 21%, 78% nitrogen, 0.003% carbon dioxide. And the whole climate debate, global warming, is about carbon dioxide going from 0.003% to 0.004%. It's going to change the face of this world. I suppose some of you must be reading about this in the newspaper or in class. So the planet has also been keeping a steady state. Now, how does it do that? For example, in seawater, the salt content of seawater is 3.4% by weight, and it's remained that way for over 2 billion years, or 3 billion years, which is 3/4 of the age of the planet. But how has it been possible? Because all the time salt is being washed into the oceans. So somewhere the salt must be going out. Okay? We'll come to that later. Now, you know how this works in nature. Supposing we have a carbon atom today, you all had some lunch today, I presume, and you had some sabzi. I don't know, spinach, bhindi, whatever, lauki.
So you had a lot of carbon atoms today. Tomorrow some of them will go out. We don't have to go into details. You know how they go out. Okay? And in a few days they might be part of the soil. It's called night soil, but then it finally becomes day soil also. And it goes back. It keeps cycling. The atom keeps cycling all the time. But the interesting thing about life is that this cycling means that there is no waste on the planet. Okay? Everything that we have, the plants die, we might die, all the decomposition is done, we are built out of all those carbon atoms. I'm just taking one example. And then the carbon dioxide goes back into the atmosphere and it goes into photosynthesis and starts becoming plant matter again. So there is no waste on the planet, and this is a natural cycle. There's a natural cycle for each element. The other ones are not. Nitrogen is well known, carbon is known, phosphorus is known, it's in trouble. Most of the others you don't hear about, at least in school, and mostly in college and university either. And each of them, everything has to be recycled. How is it done? Well, there are hundreds of species that carry this out and millions of bacteria which do this. There's a whole network of all the life, from insects to bacteria to species, which does all this. That network is going on all the time. Okay? Now what will happen? I'm not going to go on because I have about 45 minutes and I have to explain a few things to you. What will happen if 52% of the species that we know, we don't know about the bacteria, if 52% of the species that we know have already been extinguished? So something is wrong in the way that science is being used, or technology, which comes out of science. Okay? As I said, each one has one of each: a computer, a cell phone, a headphone, a whatever system. You don't need all these things, but they're multiplying and they're thrown away after 2 years because you get a new one. So the consumption that has gone on in the last 50 years is so great that 50% of the species and 1/3 of the entire living resource of the planet has got finished. So we don't want to come to such a nasty end, right? So we want to do something about it. And that's what actually I am going to tell you a couple of things that we can do about it. So first I'm going to show you a small movie. This was just an introduction to tell you why I am doing this. It's not that there's anything wrong with science. Science is about knowledge and it's about the known. But when you consider the whole life on the planet, a lot is known. After all, we were told by Mr. Dharamveer that there are some great, incredible medical techniques and all kinds of sensors and things that are happening. But there's infinitely more that is unknown. And if you are interested in life, you don't know how to deal, science does not know how to deal with the unknown. And to deal with the unknown, you need this natural wisdom that I was talking about natural cycles, about species, biodiversity, which enables you to have natural cycles. That enables you to have a steady state and give you your mangoes every day, give you your vegetables every day, give you your grain every day. Okay? So there's a lot more going on that is outside of science, and so you need some wisdom. And what we are talking about is how we can put this wisdom into science. And believe you me that it has not been done. So I thought it is about time. You people are all very young. You're going to come face to face with it even more than us. Problems in daily life. Water is going to run out. Air is going to become bad. Everything is happening. The forests are disappearing. The floods are going to come. So we have to do something that we can get out of this jam that we put ourselves in. So I'm going to start with a small movie on water, and then I'll take 10 minutes to tell you about a couple of water solutions, okay? If that's all right. I thought it would be nice to see a movie. 55 million years ago, the Himalayas were formed and the Yamuna started flowing.
Each year, the river flooded its banks and left behind its legacy of sand, making the floodplains. This has become the invaluable inheritance of our city. Mineral water is rich in nutrients and trace elements that we all need. All these natural resources like glaciers, rivers, original forests are created by millions of years of evolution. Their loss is irreversible. Life is intrinsically linked to natural resource through evolution. But we are losing them very fast. The Millennium Report says that over 50% of the world's ecosystems are showing terminal loss. And the population in India has become almost 4 times what it was at independence. We cannot go the American way. Compared to India, America has 12 times more natural resource per person. Now for a little bit of magic. In one of the glasses is Yamuna sand. This is the same sand that populates the floodplains of the Yamuna, which are 100 square kilometers large and 40 meters deep. And now you will see how much water this sand can hold. So I begin here with a glass of water which has exactly the same level of water as the sand, and I begin to fill up the sand with water. You can see the water darkening, the sand darkening where the water is coming in. So we are gradually getting to the bottom of the glass. The water is percolating through the sand. You can see that it is percolating quite fast. So you see, if you compare the levels of the two glasses, that at least 50% of the water has soaked into the sand. And this is exactly what the Yamuna floodplain can do for you. If dredged with monsoon discharge water, this 100 square kilometers, which is 40 meters deep, can fill half its volume with water. That is about 2 billion cubic meters. And out of this you can extract half of that amount, which is called the specific yield. That's about 1 billion cubic meters, and that is very close to what the Jal Board supplies Delhi today. So this is just to illustrate to you how valuable this top sand layer of 40 meters on the Yamuna floodplains is. This picture gives you the actual profile of the river Yamuna. The light-colored section on top is the sandy layer of the Yamuna. It varies from 80 meters below ground on the left
to 30 meters over part of some of the other sections. The giant aquifer that you have just seen, which is the floodplain of the river Yamuna, can yield about 900 million cubic meters of water every year. We have 5 times this amount, about 4 billion cubic meters, going out as monsoon discharge from June to September each year. So we have the storage in the floodplain and we have the water to recharge it every year. How do we do this? Earlier, in the 60s, for example, we had floods every year. Now we don't. Once in 10 years. The last one was in 1995. A simple scheme will do this for us. If we embank the area between 2 successive barrages and open the upstream barrage, close the downstream one, and let the water flow to fill up the embanked floodplain area with about 2 feet of water for a few days till it saturates. We now have a fully water-charged floodplain ready for use. In the water-scarce summer months, April to June, we can draw out the water using tube wells. In July, as the monsoon discharge comes in, we can again recharge the floodplain. This scheme is preserve and use, non-invasive use of a phenomenal natural resource. The Shanghai area in China is spending a staggering $6 billion to recycle water for 25 million people. In recycled water, quality also suffers. We have given a scheme where we can service 3/4 of Delhi's 17 million population with fresh monsoon water for free. Whether we value this water at current market rates for tankers or recycling cost, it is worth 9,000 crores of water a year on this day. But actually, it is forever to preserve and to use. This is huge and important for the life of the city. Water harvesting, all of the rooftops in the city of Delhi and the NCR can provide for only 5% of this, and it is expensive in terms of infrastructure. Encroachments go on unabated, not entirely out of ignorance. The present and future generations must know what they are losing. This, what you see before you, is our local goddess, the Yamuna, today. We can treat and clean all the city discharge that goes into the sacred river. And as we have shown, the goddess Yamuna can be restored and be the savior of our city. So we now know that the floodplain is such an invaluable resource. It is then essential that all of us make the government enact a law that totally stops any further building on the floodplain immediately. Schools, colleges, foundations and media have a very major role to expedite this. It is very promising that the Lieutenant Governor, as chairman of the Prime Minister's Committee on the Yamuna, has asked the Central Groundwater Board to prepare a blueprint for this scheme. This is indeed a very progressive step. This is only a beginning. All of India's rivers need to be preserved for the future. They are literally crying out for it. Your life depends essentially on this water. The time is now, otherwise they shall be all gone. We ask you for a small contribution to adopt and protect a small part of the floodplain
from encroachment and pollution. If you need help, please contact us. "300 cities can be completely serviced by floodplain water, and floodplain water is very, very, very good. It's not the same quality as river, because it is the rain which is coming down, which is unpolluted, that's recharging this wide floodplain. Floodplain of the Yamuna is at least 6-10 kilometers. The Brahmaputra is 30 kilometers. And the flood water which comes late in the season. So when you dig a well and take out the water, you find the water quality is very good. And you don't need to recycle. But this movie was a very old movie, because at that particular time we were just looking at what it was. And if you want to be very, very careful, non-invasive is the word, then you shouldn't use more water than is recharged every year. So I'm going to take a little more time just to show you how these solutions come about, how you can make non-invasive solutions, okay? So the movie was just to show you what was going on over there. So I'm going to jump across here. You have seen all this. You've seen this also. So let's look at this. So what is the floodplain? There's something very special about the floodplain. You know, the floodplain is at least 5 kilometers wide, and it runs for thousands of kilometers, and mostly for Himalayan rivers, it's 100 meters deep. And it's not half of it which is water because of gravity, only about 35-40% of it, 35 to 40%. So it is the most natural and best aquifer system that we have. And nobody in the world has used it. So all this research was everything that we just did in 4 or 5 years in Delhi, because we thought it was a great idea. Many rivers don't have these floodplains. The European rivers don't. They don't even have a water problem. But China, India, Middle East, that is where you can use this in hundreds of cities, for example. Okay, then the quality, I already told you, is very, very good. But where you have to be careful is, you must not use more than the water that's recharged every year. That is the most important thing. That's what you must learn. I think all our forefathers knew about this. Never push the earth to balding. Never push it so hard that exploit it. Only use what it gives you back every year. Okay? Only use that much. And you have to work that out. That takes a fair amount of research to do, because it has not been done. So we worked out what it could, and that's why the estimate, what I said, we came to 1/3 of that for Delhi. But if you look at the Mahanadi, do you all know where the Mahanadi is? In Cuttack and Bhubaneswar, Orissa. It gets 3 times the amount of rainfall as Delhi. And that river can give you water for 5 million people without a problem. Although there are only 2.5 million people there. Delhi, of course, is too big, so it can't be watered by this. But so many other cities can be. Okay? And when the river rises in the flood at peak flood, it is about 4 meters higher. So the water starts going, the river becomes from say 80 meters, it becomes almost a kilometer wide, and the water goes to both sides and fills up the floodplain. But still, in Delhi, you won't be able to get more than 250 million cubic meters, good for about 3-4 million people in a year. So here's a solution. Okay, you can use it every year. All you need is a grid of tube wells, and after that, if you want to remove them, you can remove them. The floodplain will remain as it is. We changed the idea of doing any engineering, because the moment human beings start working with a place, they finish it off. So let it naturally recharge and just naturally store water, and we can do this just by having a grid of tube wells. Okay, so why is it non-invasive? If it's non-invasive, it will last you year after year after year, generation after generation after generation. Now, what have they done in Delhi, and what have they done in Tamil Nadu?
They've actually done sand mining in Tamil Nadu where the river is only 20 meters deep and 10 meters of sand has been taken out by the building lobby. Now they don't have water. In Delhi, the Noida aquifer and Greater Noida, they've done so much building that Noida for 30 years got water from the aquifer between the two most polluted rivers, Hindan and Yamuna, because the polluted water doesn't come in even. But now they've overexploited it and the water has started coming in. So once the resource is finished, it's finished. So what I'm trying to say is you have to be very careful about making sure that your intervention when you use science is non-invasive. That's all I wanted to say. Now I want to give you one more little instance of a solution. And usually you work on these solutions wherever you are. I mean, if you're in Chandigarh, there's no river here. So you can't do it. But if you're in a city which has a river, you can do it. But in Chandigarh, you can do something else. Okay, so we'll come to that in a moment. Okay, now I don't want to... This you should remember. We are trying to give you some solutions which will make you go on year after year, as I said, in a non-invasive way. Okay? Now, I want to do one more little explanation, which you can do in Chandigarh. In Delhi, we have something called the Delhi Ridge, which is an Aravalli forest area. Most of you don't know that the Aravallis are 50 times older than the Himalayas. And they came all the way from Antarctica with Gondwana land when the Indian plate came and bumped into the Asian plate to make the Himalayas. So they're very old, but they have a forest and it's a thorn forest, and Delhi doesn't get very much rain. It gets much less rain than Chandigarh, 60 centimeters in a year. But now I want to go back to say that what is a spring? Have you all had mineral water? You must have had at some point. Himalayan mineral water. Okay, Himalayan mineral water, if you go and buy it today in the city in Chandigarh, it will cost you 48 rupees or could be 50 rupees. For 1 liter. This is not mineral water. This is water which is sold is reverse osmosis water, which has all the good nutrients and trace elements taken out of it. That's why mineral water sells for 50 rupees a liter. Now, what is mineral water? Have you ever thought? What happens up in the mountains? It's supposed to come from the Himalayas. Rain falls on the forest and there's leaf matter, humus. It picks up nutrients from the humus, goes down through the rock and comes out in a spring. It picks up minerals from the rock. So what happens is that the minerals and the nutrients come in that water. And that is the water that our system is used to. Till 50 years ago, everybody was drinking such water. Like everybody was eating organic food. But now, we can't drink it because we polluted all the water, so we have to drink water like this, which is 12 rupees or 10 rupees a liter. Now, how do you get this mineral water locally? Well, you have the Shivaliks in Chandigarh, we have the ridge in Delhi. It's a forest. Now, take this forest, the rain falls on it, and it goes down, and it goes and fills up the aquifer underground. It doesn't come out in a spring, but it settles underground. If you find the aquifers, you need 2 or 3 liters a day. So if you need water for about 3 million people, it's very easy to get it from your local forest. And you can dispense it from, mother dairy outlets, just put the water on top, pay 4 rupees, everybody, and it's a huge health benefit and gives you an enormous economic benefit. Because if you can't show that you're making some money out of it, nobody listens anymore. So you can get health benefit, you can get economic benefit, and you go local and you make your own mineral water. So you people can start doing that right now. Because if you don't do it, then those areas will also go away. You make them into a water sanctuary.
So that's what I've just tried to indicate over here. I've given you only two solutions because you people are rather young. There are many things that we work on. We work on cities, we work on energy, but it has to be non-invasive. Like energy, solar energy in Ladakh, which gets 300 clear days a year. You can do something over there that is very non-invasive and gives you an enormous amount of solar energy, about 9 times what you get in Germany. You can also make cities in a way that they are self-sustaining. Okay? Not smart cities. You know, everybody is very smart and uses a lot of cosmetics, and then you make a mess out of everything. But healthy cities which are self-sustaining. So what I was trying to move you, I said the talk is about you. It's not about the frontiers of the universe. You'll have talks about that too. But how to change your scheme of living now so that you people actually can at least find that you can get into a healthy life. And if we don't do it, you can do as much science and technology as you want, but all you're going to be doing is surviving, barely surviving, till you come to an end. And so I should end with that because I have a signal from there to come to an end. Thank you. Good evening, sir. My question is that the underground water all contains the required amount of minerals, which is good for our body, and if it does not exceed the limit of minerals, then it may be healthy for our body. But why you are saying that the forest water can produce only the mineral water? I haven't quite understood your question, but if you just get water locally here, right? Yeah. Then firstly, supposing you dig a well right here, then firstly you will have pollution from the city because there is a lot of sewage in the city that goes there. You can have also industrial pollution and you will not have the right nutrients, and then it doesn't go through any kind of rock formation. So these are the things, that is why people get this water from mountains and forests. Sir, actually mountains, the water we obtain from the mountains contain the remains or the minerals of the humus. But if we get the underground water, it contains necessary ionic salts, etc. And from food we already obtain the organic matter which we will obtain from the humus through the forest water. No, I haven't. I don't know what to answer to your question. I already answered your question. If you get the water from the river or of the floodplain, it will not be mineral water. Because this water now yes. is just coming, as I said, that if you go to that garden over there and you get the water, it will have all kinds of pollution in it. Yeah. And it will also not have the right amount of minerals. But if you go to a forest and get the water, then it has most of the things that you need, okay, underneath it. I understand. Okay, sir. Thank you. Sir, I'm also belongs to Agra and I'm मैं रोज़ाना अपने आगरा में यमुना नदी को देखता हूँ सर. मैं सोचता हूँ कि आपने जितना बताया मैं बहुत इंस्पायर हुआ उससे, पर मैं सोचता हूँ कि एज ए सिविलियन मैं एक आम स्टूडेंट के तौर पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि सर मैं देखता हूँ कि मेरे घर के बगल से बालू निकाले जाते हैं नदियों से, इतना कुछ होता है और सर कुछ होता कुछ कोई थोड़ा पास रखिए सर, जो नदियों से बालू निकाला जाता है. अब मैं खुद यमुना नदी के बगल से रहता हूँ तो देखता हूँ कि बालू निकालता है, कोई कुछ करता भी नहीं है, होता भी नहीं है. और जितना मुझे मालूम है कि बालू जो निकालने का होता है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है, पर उसमें कुछ नहीं पूरे ईयर बालू निकाला जाता है. तो सर मैं भी कुछ सोचता हूँ इसके लिए, पर आज का आपको देखा तो पहले पूछ लिया सर. देखिए अभी ये जो आपने यमुना की स्कीम बताई है, ये दिल्ली का जल बोर्ड है, उसमें ये स्कीम टेंडर हो चुकी है. तो दिल्ली में करीब 15 लाख लोगों के लिए पानी यहाँ से फ्लड प्लेन से निकलेगा. जब लोगों को इतना समझ आ जाएगा, जब ऐसी चीज़ चल जाएगी, तब तो उसका मूल्य समझ आ जाएगा लोगों को. जब मूल्य समझ आ जाएगा तब वो किसी को नहीं करने देंगे. जो आपको ये समझ आ जाए, तो जैसे आपकी पीढ़ी है ना, आप अभी तो यंग हैं, हमारे जैसे नहीं, तो आपको ये समझ आ जाए कि ये आप आगे का आपका पानी चोर रहे हैं,
आप अपने सब दोस्तों को बताइए, उसके बाद आप वहाँ पे जाके आप चाहे उनके यहाँ पे आंदोलन करिए, जो कुछ भी करिए कि आप हमारी पीढ़ी का पानी छोड़ दें, तो उसके बाद वो बंद हो जाएगा। पर आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का मतलब ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि अब परिस्थिति जो है, अभी जो हालात हैं, उसमें पानी कहाँ से आएगा। तो हम ये आपको बता रहे हैं साइंस के माध्यम से कि वो पानी एक जगह पे है, अभी वो दुनिया में इस्तेमाल नहीं हुआ है, ऐसी स्कीम अभी यूज़ नहीं हुई है। अब इस स्कीम के ऊपर आप काम करें और ऐसे करें कि ये स्कीम से नुकसान नहीं पहुँचे। तो आपको इसके लिए थोड़ा बहुत झगड़ना पड़ेगा। आप अपने माँ बाप से बात करिए, उनसे कहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करें, कुछ तो करना पड़ेगा ना। पहले साइंस का तो इतना मतलब बनता है कि आपको समझा दें कि भाई इसमें क्या मूल्य है, इसमें क्या गुण है। हाँ, अच्छा, ओके सर, थैंक यू। सोनी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अपने मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स दिल्ली के लिए, क्या अगर इन्हीं एग्जांपल्स को इंडिया के बिहाफ पे लिया जाए तो स्टोरी कैन बी डिफरेंट? नहीं, ये थोड़ा सा मैंने बताया आपको कि जहाँ भी नदी है, और ये भी नहीं ज़रूरी है कि वो नदी 12 मास चलती रहे, जहाँ भी नदी है वहाँ पे ही हो सकता है, क्योंकि आप नदी के पास जाएंगे आपको हमेशा रेत मिलेगी। वो रेत जो है, वो रेत में पानी ये जमा हो जाता है। तो और दूसरी चीज़ है कि ये जो रेत के अंदर पानी होता है, अब मैं आपको एक मथुरा की छोटी सी कहानी बताऊं। हम मथुरा गए एक बार, तो हम लोगों को खाना खाना था, क्योंकि करीब 1 बज गया था। तो एक छोटा सा अंदर जाके होटल देखा, तो उनसे पूछा हमने, भाई कि घर वाला खाना खिलाओगे? तो कहने लगे साहब क्यों नहीं खिलाएंगे। तो हमने कहा हम ये ज़्यादा तेल वेल और फ्राई खाना नहीं खा सकते। तो फिर हमने कहा अच्छा अब पानी पीना है हमें, तो पर हम कैसा पानी है आपका? तो कहता है हमारा पानी तो अच्छा है। तो मैंने कहा जमुना का पानी तो बहुत ख़राब है, आप कैसे कह रहे हो आपका पानी अच्छा है? तो कहने लगे साहब जमुना का पानी है, वहाँ से पानी लेते नहीं, हमारे यहाँ तो बोरिंग है और उसी पानी पे हम हैं, तो हमारी सेहत देखिए, उसके बाद बोलिए। तो 400 मीटर दूर पे उसी रेत में जो पानी निकला, वो पानी बिल्कुल पीने लायक था। तो अभी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये जैसे पिछला सवाल आया ना कि सैंड माइनिंग से कितना नुकसान हो रहा है, तमिलनाडु में तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वहाँ तो आधी फ्लड प्लेन खा गए हैं पूरी। और अब क्या होगा कि उनके पास जब पानी नहीं रहेगा, तो आप ये कर सकते हैं कि कम से कम 300-400 शहरों में ये लागू कर सकता है। सिर्फ ये गंगा बेसन में यहाँ से लेके पूरा कलकत्ते तक कम से कम 250 से शहर हैं जहाँ पे ये आप ऐसा पानी कर सकते हो। तो सब जगह ये हो सकता है जहाँ पे नदी हो, और कोई कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पे सीज़न की बारिश होती है सिर्फ, और वो पर ये जमा हो जाता है। पर वो पानी जो है आपको ज़रा ख्याल से उतना ही निकालना चाहिए जितना पानी जमा होता है। जो आप ज़्यादा निकालोगे तो वो पानी वहाँ का ख़त्म हो जाएगा और बाहर से खारा पानी जो है कंटेमिनेटेड वाटर वो आ जाएगा। रिस्पेक्टेड सर, मेरा सवाल ये है कि हम बिल्कुल दिल्ली के करीब हैं। दिल्ली से सिर्फ 70 किलोमीटर की जगह पे हरियाणा में एक जगह मेवात, जो अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है 6-7 साल पहले। साइबर सिटी में ज़मीन के रेट 50,000 और 1 लाख तक हैं। उसी से ठीक 25 किलोमीटर आगे जाके पानी है, लेकिन जो अरावली पहाड़ी की जो वैली है उसी के एक्वाफायर वाटर ही है केवल, और वहीं से शहर को पीने का पानी मिलता है। लेटेस्टली वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाया गया और इंजीनियरिंग कॉलेज भी डेवलप किया गया, और जो जामिया से ही हैं श्री मुन्ना खान करके हैं जो उसके चांसलर वहाँ पे प्रोफेसर हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सर वहाँ पे ये है कि वहाँ का पानी इतना साल्टी है, इतना सैलाइन है कि वहाँ से मकान भी नहीं बना सकते वो, और उस पानी को भी परचेज करना पड़ता है वहाँ से जो ट्रैक्टर की बना रखे उन्होंने ट्रॉलर टाइप, और उससे लाके पानी डालते हैं जिसकी कॉस्ट 500 रुपये लगभग होती है। तो वहाँ पे जो साल्टी वाटर है उस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं? और मैं तो इनवाइट करता हूँ सर आपको, क्योंकि बहुत करीब है, केवल दिल्ली से 2 घंटे का रास्ता है, बिल्कुल अच्छा रोड है, तो आप आके वहाँ पे कुछ ऐसा काम करें जो साल्टी वाटर है उसको किसी तरह प्यूरीफाई किया जाए और लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे उनको दूर किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन रेशियो है वो भी काफ़ी कम है
और 75% जो पॉपुलेशन है वो मोमडन है। मेयो एक कम्युनिटी है वहाँ की, और जो बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो हम चाहते हैं सर आप वहाँ आएँ और इस साल्टी वाटर के ऊपर कुछ सजेशंस दें। नहीं, मैं तो आ जाऊंगा, पर पानी सही नहीं होगा। देखिए ऐसा है जी कि एक बार आपका पानी खारा हो जाए या सॉल्टी हो जाए या कंटेमिनेट हो जाए, तब आप उसे नहीं साफ कर सकते हैं। यही यही कर सकते हैं आरओ, और कोई तरीका नहीं है। देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि वहाँ क्या हुआ है कि लोग जब ज़्यादा पानी निकाल लेते हैं, जितना आपको कुदरत देती है उससे ज़्यादा पानी आप निकाल लो, तो बाहर के पानी आ जाते हैं, जो खारे पानी हो या ख़राब पानी हो। एक बार वो वहाँ पे आ गए, तब आप उसका कुछ नहीं कर सकते। या तो उस पानी को पूरे को निकाल दीजिए, पर फिर और पानी आ जाएगा। तो अब आपको वहाँ वही डिसैलिनेशन करना पड़ेगा या रिवर्स ऑस्मोसिस, और कोई चारा नहीं है। इसीलिए मेरी तो अर्ज़ ये है कि आप कुदरत का ज़रा ख्याल रखें, कुदरत की कदर करें, और क्योंकि इसी के ऊपर आपका जीवन जो है वो इसी के ऊपर चलता है। तो अब जब वहाँ पे खारा पानी आ गया है तो इसका तो बस यही इलाज है, और कुछ नहीं। जी सर, लेकिन सर अरावली पहाड़ी की जो किनारे किनारे हैं उनके साइड में मीठा पानी है, तो क्या उस पानी के साथ हम उसको किसी तरह डेवलप नहीं कर सकते? वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा कोई नदी भी नहीं है आसपास। देखिए ऐसा है कि ये हो सकता है कि लोकलाइज्ड हो, तो फिर आप आसपास में देखिए जहाँ पे अच्छा पानी है, पर उसका ज़्यादा एक्सप्लॉइट मत करिए। जितना आपको कुदरत देती उतना लीजिए, पर उसके आसपास में कहीं अच्छा पानी भी होगा, सब पानी खारा नहीं होगा। नहीं, जो अरावली के सर पहाड़ी आती है जो अलवर से लेकर और दिल्ली तक आती है, उसके किनारे किनारे जो वाटर सप्लाई वाले उन्होंने बोर कर रखे हैं, ड्रिल किए हुए हैं, तो वहाँ पे जो ड्रिलिंग है उसमें मीठा पानी है सिर्फ। लेकिन जो 10 किलोमीटर जो केवल लगभग 20-30 फुट पे ही जो पानी है इजीली अवेलेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा साल्टी है। और ये सबसे मुझे देखिए इसका पूरा इतिहास पता नहीं है, कि जो कुदरती भी हो सकता है, जियोलॉजिकली। जी कुदरती है, क्योंकि 20 साल से तो हम देख रहे हैं कई जगह हैं जहाँ पे, जैसे कि बांग्लादेश और बंगाल में आर्सेनिक आ जाता है पानी में, यहाँ पे भी आपका खारा पानी कई जगह हो सकता है। तो हो सकता है आपके पास में कहीं अच्छी जगह हो जहाँ पानी भी ठीक हो, पर उसको ख्याल से इस्तेमाल करें, ज़्यादा नहीं। लेकिन सर जो साल्टी है इसके ऊपर कोई वर्क अगर है दिल्ली के अंदर तो उसको यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। डिसैलिनेशन यही आरओ से ही होता है। थैंक यू सर। सर माय नेम इज़ तौसीफ रज़ा और मैं बिहार के कटिहार ज़िले से बिलोंग करता हूँ। सर मैं जिस शहर में बिलोंग से हूँ वहाँ के कई जगहों पर पानी आयरन युक्त है। मैंने कई केस देखा है, जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल कोड़ा लगाया गया है, वहाँ से फ्रेश पानी आ रहा है और उसके 2 मीटर के बगल में फिर ट्यूबवेल गाड़ा गया है, वहाँ से आयरन युक्त पानी निकल रहा है। ऐसा क्यों? और मैंने एक और केस देखा है जो मेरे बिल्कुल बगल के घर का है। वहाँ पे कुछ दिन पहले ट्यूबवेल से साफ पानी आ रहा था और ट्यूबवेल ख़राब हो गई, ट्यूबवेल एक्सचेंज करके उसी जगह पर लगाया गया, फिर वहाँ से आयरन युक्त पानी निकलने लगी। ऐसा सिचुएशन क्यों क्रिएट हुआ? देखिए जो ये आयरन आ गया पानी में, तो इसके दो वजह हो सकती हैं। एक तो कहीं कहीं कुदरती आसपास में ज़्यादा पानी आप खींच लें तो कहीं आसपास से जो पहले मीठा था कुछ आयरन आ सकता है। अब आयरन आप निकाल तो सकते हैं, पर उसमें भी आयरन से इतना नुकसान तो नहीं होता है। हो सकता है जो बहुत ज़्यादा हो, पर उसका रंग फ़र्क हो जाता है पानी का। यही आप कह रहे हैं ना, उसको फ़िल्टर भी कर ले तो ठीक हो सकता है। पर दूसरा यही हो सकता है कि या तो कुदरती है, कुदरती नहीं है तो कोई वहाँ पे कारखाना है जो चीज़ें छोड़ रहा है। जैसे कई कारखाने होते हैं जिनका वेस्ट वाटर उसमें आयरन होता है। सर मेरा जो इलाका है वहाँ पर वो बिल्कुल ही पीपल वो पूरी तरह से लोगों के बसने के लिए वहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है। और मेरा क्वेश्चन ये था कि आखिर ये इतना कम डिस्टेंस पर ये फ़र्क क्यों हो गया और उसी जगह पर ट्यूबवेल डालने के बावजूद ऐसा क्यों हो गया, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना ही पानी निकाला जाता है। एक नॉर्मल लोग रहते हैं जिनकी पानी की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जिससे वो ज़्यादा पानी को वेस्ट करे, जो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो। आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर ये ऐसा होता है कि आप पृथ्वी में देखेंगे कि सब जगह का पानी अच्छा नहीं मिलेगा। कई जगह ऐसे भी होती जहाँ कुदरती पानी में ज़्यादा कुछ मिलावट आ जाती, आर्सेनिक हो जाता है, क्लोराइड हो जाता है, आयरन हो जाता है, फ्लोराइड हो जाता है।
और कई चीज़ें हैं कि जो हमारे आदमियों की जो 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 खुराफात है उसकी वजह से पानी आप गंदा कर सकते हैं। आपकी बात से मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पानी जो है ये कुदरती, उसमें आयरन ज़्यादा है। यस सर, मेरे घर में पानी आयरन युक्त है। तो उसका तो यही है कि या तो फिल्टर कर लो जो अब मोटा होगा, नहीं होगा तो उसके बाद उसको भी आरओ करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी जगह से पानी लाना पड़ेगा। और इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, कई जगह होता है ऐसा। पर आपको आसपास में और भी कुछ पानी मिल जाएगा जिसमें इतना लोहा नहीं होगा। हाँ, अब मुझे पता नहीं वो कुछ है कि आपका नेक्स्ट प्रोग्राम में देरी नहीं हो रही है। हम तो यहाँ मौजूद हैं, जो किसी को बात करनी है तो बड़ी खुशी से करें। गुड इवनिंग सर। हाँ, नहीं सर, आप पूछिए। सर मैं सुनील कुमार दिल्ली से हूँ। सर आजकल रेन एसिड रेन में तब्दील होता जा रहा है सर, जिसकी वजह से ताजमहल भी पीला पड़ना जा रहा है। सर इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, एसिड रेन तो ये तो बड़ी, इसका तो हल बहुत आसान है। जितने कारखाने हैं उनसे जितना ये निकलता है ये धुआं, वही एसिड रेन बन के नीचे आता है। तो ये तो कारखानों के ऊपर आपको कानून लगाना पड़ेगा, है जैसे वेस्ट वाटर का। अब हमारे प्रधानमंत्री आजकल ये भी कह रहे हैं कि बहुत कानून ये है कि आप गंदा पानी, गंगा को गंदा नहीं करेंगे और नदियों को गंदा नहीं करेंगे। तो हवा का भी वही हाल है जो पानी का हाल है। तो उन कारखानों पे ये आपको बंदिश, उन पे कानून लगाना पड़ेगा कि ये वो बिल्कुल ऐसा जो स्मोक है वो नहीं छोड़ सकें। यही तरीका है। इसके अलावा दूसरा कुछ तरीका नहीं है? इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप बताइए। अब ऊपर है, आप अपने आप ही बताओ। आपको पता है कि कुछ निकल रही है दूषित चीज़, तो उसको बंद करने के लिए तो वही कारखाना बंद, या तो बंद करो, नहीं तो कारखाने से कहो कि आप ठीक करो अपने को। आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगे? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है किशोर मंच, CIET NCERT, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली 110016। आप अपने सुझाव हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ciet.kishormanch@gmail.com।